I hope all of you are doing great and living a healthy and safe life. Okay, so moving ahead. As you all know that we are here on day 3 of our webinar series for unfolding the future of CA practice. Good evening, Pranav. How are you, man? Unfolding the future of CA practice, and we have already discussed in day 1 about cryptocurrencies and blockchain and their legality and taxability. And on day 2, we have already covered about detailed discussion in blockchain and robotic process automation, a little bit, a glimpse about that, and various relevant cheeses about the blockchain. And today on this day 3, we are here to discuss about a crucial aspect of forensic audit. But wait a minute before we go ahead with that. So as you all know, this webinar has been sponsored and brought to you by Optotax. Many of our professionals might already be familiar with Optotax, but those who are new to the family, let me introduce it before all of you in a minute or so. Optotax is India's #1 and biggest GST platform, and it has now been trusted by more than 50,000 professionals for their 1 million plus clients. It has been engineered for your empowerment and benefit. So I hope you can give it a try. It's currently free and there are no costs associated, and it's very efficient. And I can see that people have started joining. So that's really also a good news, because attraction of chartered accountants and other tax professionals to these emerging technological stuff and towards fintech is really an amazing and enthusiastic thing. Thank you for your love and support. And also it encourages us to do our best at what we do. That's why we keep coming up with these kind of interesting sessions and webinars. So that's all because of your love and support. Okay, so coming back to the main point, today we are going to discuss about forensic audit and emerging field. We are going to learn today about the concepts of forensic audit, the requirements of forensic audit under various laws, insight into forensic accounting and investigation standards. And all this will be summed up in simplest possible way by our faculty for today. He's a well-known and professional person in this area of professional forensic audit, but it's my duty and my honor to introduce him before all of you. CA Rahul Jindal ji. He's a qualified FCA, LLB, DISA, certified fraud examiner, certified forensic auditor, IBBI registered valuer, and certified concurrent auditor. CA Rahul Jindal ji is a forensic audit expert and has handled more than 35,000 crores of forensic audits for public sector banks, private sector banks, BSE, and other institutions. He has taken seminars for various institutions such as NIRC-ICI, Bank of India, Economic Offence Wing, NIRC Study Circle, WIRC Study Circle. So quite an impressive profile he has in the area of forensic audit, and this is our huge kind of luck that we are going to share this and learn this forensic audit with him today. So it's our honor to have such a dynamic and all-round personality like you with us today. So first of all, thank you for attending this webinar and giving us this opportunity so that we get to share this stage with you. And I guess the participants now might be waiting for your kind deliberation. So I won't take much time of you, and straightforward, I'd like to hand this stage to you so that you can enlighten our participants today with forensic audit and related stuff. So handing over to you, sir. Thank you, sir. First of all, I'd like to thank Optotax for giving me this opportunity to share my views on forensic audit and investigation standards. So I can see we have 24 participants today. So Sunday go up seminar, you are all attending seminar on Sunday. That is a great compliment to every one of you that you are sparing your time on Sunday itself. Now we'll start with our today's topic regarding forensic audits. So I'll share with you what is in today's scenario, what is the scope of forensic audit, like what all agencies get the forensic audit done. Along with that, we'll discuss about the areas in which we can look after the forensic audit.
Thirdly, we look into the scope that the banks provide us, the banking regulations, Bombay Stock Exchange or other agencies. What is the scope of forensic audit that they provide us? Along with the scope, I'll try to link the forensic audit and investigation standards with you, because studying the standards separately is of not of that much use unless and until you have that practical exposure. So the forensic audit standards have been made. I was in the group of ICI for formation of forensic audit standards. So I have gone through all the standards. So around 20 standards have been released till now by the institute. So you can go through them. They will give you a brief idea of what all needs to be looked at. But when you will come into the practical life, when you will do the audits practically, you will come to know the variations or what practical experiences you need to have to undertake such audits. So first and foremost, we need to understand what is forensic audit and what is the need of forensic audit. I'll just share my screen. So first and foremost, we need to understand what is forensic audit and the need in today's scenario. So basically, forensic audit is done for the accounts which have been classified as a non-performing assets by the banks, whereby the banks need to know whether any diversion of funds took place or not. So हमको ढूंढना है, we have to find out कि whether there was any diversion of fund or it was a genuine business loss. Investigation or forensic audit is done to identify the loss of public money. You need to understand what is public money. Basically, public money means bank loans, listed companies, investors. So these are the kinds whereby public money is involved. So as an auditor, whenever you are appointed, so from which all agencies can appoint you to do forensic audit? The banks can appoint you. Central Bureau of Investigation can appoint you. SFIO. Then EOW can appoint you. ED can appoint you. Bombay Stock Exchange. SEBI can appoint you. And other private clients and government organizations can appoint you. So if you are doing any audit prior to it being classified as an NPA, it is generally called a due diligence assignment. FDD, financial due diligence. After it has been classified as an audit NPA account, it is renamed, the terminology is changed to forensic audit, investigation audit, transaction audit. So these are the terms that are used after the account has been classified as an NPA. So as I've told you, what all agencies can appoint you. What is the need of forensic audit? As I explained you that you need to know what is the need of forensic audit. The banks, these agencies, basic requirement of these agencies is to find out कि ultimately पैसा कहाँ पे गया? Where have the funds gone? Was there a genuine business loss or the funds have been diverted and siphoned off from the company? This is the main purpose of forensic audit. I'll give you an example. How do we identify whether it is a genuine business loss or it has been siphoned off from the company? There are two scenarios. So suppose for an example, I'll share as many practical examples as I can with you all so that you know what topic we are talking about. I'll give you an example. I'm giving you an example of a genuine business loss. In 2005-06, there was a boom of solar energy. Each and every big MNCs or companies, they were looking to set up solar power plants. What was the reason for that? It was having a very good margin there. So if you were setting up a solar power plant, you would have a margin of 30 to 40%. Other than that, you were getting subsidies from the government. You were getting various benefits from the government. You were getting cheaper land to set up a solar power plant. You were getting various exemptions as well in income tax. At that time, the per unit rate of electricity was around 18 to 19 rupees per unit. For an example, we take as 20 rupees per unit was the sale price of electricity. So in 2006, I set up a power plant by taking a loan of 1,000 crores from the banks to set up a solar power plant. So generally 1 megawatt costs 5 crore rupees. So if I have taken a loan of 1,000, so it will be 200 megawatt plant that I'm setting up. So for setting up 200 megawatt power plant, I took a loan of 1,000 rupees with a projection that I will be earning 20 rupees per unit of electricity sold by me. So 20 rupees per unit electricity to be sold, I have taken a loan of 1,000 crores. So now in 20 rupees that I will earn, I will incur a fixed cost of, for an example, 8 rupees and variable cost of 6 rupees.
So the total cost I'll be incurring is 14 rupees. 8 rupees is the fixed cost and 6 rupees is the variable cost. So my net gain is 6 rupees. I set up a power plant, I started running it. Now what happened? In 2012 and 2013, the concept of reverse bidding was started. What do you mean by reverse bidding? The government said, you tell us at what rate, at what minimal rate you can provide us the electricity. कि कम से कम आप कितने रेट पे हमको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर सकते हैं. It was open for all over the world, for all the companies around the world. So चाइना से, जापान से, कोरिया से, all over world से कंपनीज आई. किसी ने कहा सर हम आपको 15 रुपए में देंगे, हम 12 रुपए में देंगे, हम 10 रुपए में देंगे, हम 8 रुपए में देंगे. आज की डेट में पर यूनिट इलेक्ट्रिसिटी का रेट है 3 to 4 rupees per unit, and that I am saying on the higher side. The rate per unit rate of electricity is 3 to 4 rupees. Now what happens? Now I am the one who had set up a solar power plant with a projection of 20 rupees, whereby 8 rupees is my fixed cost and 6 rupees is my variable cost. Now I have to sign PPA at 4 rupees per unit to sale. So my revenue becomes 4 rupees. Now let us assume we don't have any variable cost. हमने सारे employees निकाल लिए, सबको निकाल दिया, हमने कुछ है ही नहीं कंपनी में. Still 8 rupees is the fixed cost of running that plant. So my revenue is 4 rupees, my cost is 8 rupees. In that case, whatever the case may be, you will never be able to repay your loan to the banks. So this is a case of a genuine business loss whereby the borrower had to bear the loss due to change in government policies. इसमें गवर्नमेंट इंसेंटिव्स देती है, सब्सिडी देती है, तो उसमें काफी डिले था कंपनीज के लिए. The companies applied for subsidy of 1,000 crores before the government, but that was not given to them due to delay or change in government, whatever the case may be. So I have set up the power plant of 1,000 crores. I have invested all the money in that power plant, but I am not able to earn that much revenue. I hope you are clear between genuine business loss. Now I'll tell you what is not a genuine business loss. There is a company which deals into steel. एक कंपनी है जो स्टील में डील करती है, स्टील आयरन उसमें डील करती है. Now what the company does, the company makes sale, वो रिकवर करती है पैसा और बैंक को पे कर देती है. As on 31st March 21, on the date of NPA, the company had zero stock, but it had a debtors of 200 crore rupees. Trade receivable were 200 crore rupees. Secondly, उसका बैंक से लोन था, it had a bank loan of 150 crore. बैंक लोन था 150 crore का. तो me when I as a forensic auditor I went to him, I asked him कि सर आपका बैंक लोन is 150, your bank loan is 150, but your trade receivables are 200. Why don't you recover? Why don't you recover such money from the debtors and pay it to the bankers? So his reply was, sir, we are following up with these parties to recover that money. They are not paying us, so what can we do? Sir, you have to remember two things. First and foremost, that what steps the borrower has taken to recover such money. What reasonable steps, legal steps the borrower has taken. Because in normal course of business, अगर मेरे को बैंक को पैसा देना है, if I have to pay to the banks, I will try to recover as much money from debtors as I can and pay it to the bankers. But since I am not taking any efforts to recover those 200 crore rupees, this questions the genuineness of transaction being undertaken by me. Ki whether these business transactions are genuine or not. Secondly, iron and steel business aisa hai, the rate varies very quickly. It varies in 1 or 2 days, 10 days. It is highly variable item, commodity. So it is highly improbable that the person will have 200 crore rupees as a debtor to be recovered, but he has not taken any legal steps, being the rate is highly variable. This is a case of diversion of funds or whereby the books of accounts have been manipulated by the borrower, because as a normal course of business, he has not taken those steps to recover that money so as to pay his bank liability. तो आपको ये सारी चीजों को रिव्यू करना है. First and foremost,
अब आई एम इनकॉर्पोरेटिंग द स्टैंडर्ड्स, लाइक आई टेल यू, अभी क्वेश्चन आया था स्टैंडर्ड्स के बारे में, सर ये बुक है स्टैंडर्ड्स की, ये आपको यू कैन गेट इट फ्रॉम द इंस्टीट्यूट, कंपेंडियम ऑफ फॉरेंसिक अकाउंटिंग एंड इन्वेस्टिगेशन स्टैंडर्ड्स, दिस इज द लेटेस्ट वर्जन दैट इज अवेलेबल August 21। तो इसके अंदर अगर आप देखेंगे, इसके अंदर इन्होंने यहाँ पे 20 स्टैंडर्ड्स दे रखे हैं। दे हैव बाइफरकेटेड द स्टैंडर्ड्स इनटू 5 पार्ट्स, 6 पार्ट्स। यहाँ पे पहला क्या कहता है सर, नेचर ऑफ एंगेजमेंट, फ्रॉड रिस्क, रूल्स एंड रेगुलेशन अप्लाइंग हाइपोथेसिस। तो आपको जब स्टैंडर्ड को अप्लाई करना है, मैं इसको छोड़ दीजिए, दिस इज वेरी टेक्निकल, आई विल एक्सप्लेन यू इन वेरी सिंपल लैंग्वेज। यहाँ पे वो कहता है कि आपको ऑडिट करना कैसे है, जो स्टैंडर्ड्स में कहता है कि आपकी नेचर ऑफ असाइनमेंट क्या है, planning of assignment, execution of assignment. I'll tell you in a very simple way. You can read all these standards, there's no issue, but I'll tell you in a very simple way. So whenever you are starting an assignment, first and foremost you should know about the nature of industry, कि उस industry का nature क्या है. I'll tell you, when I'll discuss the scope that is given by the banks, when you are doing an audit for manufacturing industry, you will apply different parameters. When you are doing forensic audit for a trading industry, you will apply different parameters. When you will do an audit for a company which is into the hotel business, you will apply different parameters, different checks, different verifications. When you are doing audit for a service industry, you will apply different checks, different parameters. It is not that many people come to me, sir आप अपनी कोई checklist दीजिए, सर हमको ये audit शुरू करना है forensic audit का, please provide us the checklist as to what all documents are required by us. There is no standardized checklist. You can ask for basic documents, balance sheet, annual return, books of accounts, these are basic documents, but the actual requirements, the actual checklist is dependent on the nature of industry you are auditing. So whenever you are doing a forensic audit, you should have knowledge of the nature of industry you are auditing. Unless and until you have knowledge of that, you will never be able to undertake that audit. That is the nature of engagement, your FAIS 110. Ki what is the assignment, what you have to do, what is expected out of you. I hope this point is clear. So whenever you are doing a forensic audit assignment, first and foremost, understand the nature of industry you are auditing. Secondly, thoroughly study the balance sheet. आप बैलेंस शीट में ही आपका फोरेंसिक ऑडिट जो होता है ना सर, 30% 30 to 40% audit is done on only the balance sheet. मतलब many people say we apply this software, we apply this digital forensics, this, it might be useful, but according to me, your brain is the best software to analyze any financial figure. I have done around 150 forensics, but I don't use softwares at all. मैंने आज तक एक सॉफ्टवेयर नहीं यूज करा। आपको जब भी ऑडिट करना है, whenever you have to audit, please first and foremost study the balance sheets, notes to accounts, auditor reports. You will get a lot of information from that. आपको क्या करना है, आपको बैलेंस शीट लेनी है, उसके comparisons बनाने हैं. It's like if you are auditing for 4 years or if you are auditing for 5 years, you have to prepare a comparison of balance sheet for 5 years, notes to accounts, profit and loss. Go through that thoroughly, study that comparison thoroughly. आपको पता लग जाएगा कि ultimately where the funds are stuck. It is stuck in debtors, stock, advances, other current assets, investments, whatever the case may be. So first and foremost, understand and study the balance sheet thoroughly. Once you have studied the balance sheet thoroughly, then you will be able to undertake other procedures. Other procedures जैसे, then you have to study the bank statements. Then you have to go to the books of accounts. Then you have to go to the sanction letters. All these will follow once you study the balance sheet. सर क्या होता है, अगर आप कहें सर एक सिंपल चेकलिस्ट बताइए कि चेकलिस्ट में उनको क्या क्या चेक करना है, मैं आपको लिख के दे दूंगा सर, डेटर्स चेक करिए, स्टॉक चेक करिए, करंट एसेट्स, इन्वेस्टमेंट्स, लोन्स, लाइबिलिटीज, शेयर कैपिटल, ये सारा चेक करिए। तो आपने क्या करा, आपने एक एक पॉइंट उठा के वेरीफाई करना शुरू कर दिया, लेकिन जब आपने बैलेंस शीट को रिव्यू करा, आपको पता लगा इसके डेटर्स तो कभी थे ही नहीं, या इसका स्टॉक कभी होता ही नहीं था, ये हाई सी सेल करता था, ही वाज डूइंग इनटू ट्रेडिंग, तो जैसे ही परचेज करता था वैसे सेल कर देता था। तो सर वो चेकलिस्ट में आप वो पॉइंट्स लिख के करोगे क्या? तो आपको सबसे पहले बैलेंस शीट को स्टडी करके ही चेकलिस्ट बनानी पड़ेगी।
You have to study the nature of industry. You have to study the balance sheet. After then only you can prepare your checklist. एक बार ही आपने checklist बना ली, then you have to go and study the sanction letter, जो बैंक का sanction letter होता है. काफी लोग क्या करते हैं, वो बैलेंस शीट ले ली, बुक्स ऑफ अकाउंट्स ले लिया, ऑडिट शुरू कर दिया. उनको यही नहीं पता होता कि बैंक ने क्या अलाउ कर रखा है और क्या अलाउ नहीं कर रखा. In your sanction letter, the bank sanction letter, you get many positive covenants and many negative covenants कि ये आपको allowed है और ये आपको allowed नहीं है. तो इसलिए as a forensic auditor, you have to first and foremost understand the nature of industry, study the balance sheet, and then study the sanction letter before going to books of accounts. Suppose उसके sanction letter में लिखा है कि related party debtors will not be allowed for the purpose of drawing power. तो आप अपनी चेकलिस्ट में क्या लिखेंगे? You will ask for related party transactions, the ledgers of related party. क्या फैमिली चार्ट लेंगे आप उनसे? You will ask for the family chart of the company and the directors. कि भी who are your related persons so that you can identify as per accounting standard 18 or Ind AS 24 what are the related parties and what are not. तो आपको सबसे पहले सैंक्शन लेटर को पढ़ना है. What is allowed? Suppose उसमें लिखा है instead of 90 days the trade receivables are allowed up to 120 days. Then you have to ask the management to provide you aging analysis of debtors for the period under audit. उसमें सैंक्शन लेटर में लिखा है कि advance to customers will be allowed to be considered for drawing power. Then you have to ask them to provide the aging of advance to receive customers as well. तो ये सारी चीजों जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये प्रैक्टिकली बता रहा हूँ कि आपको इन सब चीजों को पहले स्टडी करना है. You have to understand that, you have to go through them, then only you can commence your forensic audit. So I have given you brief background about forensic audit कि what do we do in forensic audit. Now I'll come to the presentation. हमने presentation शुरू नहीं करी अभी तक. The main purpose of undertaking forensic audit is to identify whether the account is fraud or not. This is the main purpose. Now there is IBA guideline, Indian Banking Association की guideline है that your forensic audit report should be conclusive. You should conclude it whether it is a fraud or a no fraud account. ठीक है सर. अब उसके अंदर क्वेश्चन आता है कि what is fraud. इसमें फ्रॉड की डेफिनेशन हैज बीन स्पेसिफाइड इन इंडियन पिनल कोड, कंपनीज एक्ट, आईबीसी. इट हैज बीन स्पेसिफाइड एवरीवेयर. बट सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊं व्हाट इज फ्रॉड. एनीथिंग व्हिच इज डन इंटेंशनली विद एन इंटेंट टू डिसीव द कंपनी और द इन्वेस्टर्स और द शेयर होल्डर्स. हिंदी में बताऊं तो जानबूझ के धोखा देना. Intention is the main thing in classifying an account as a fraud or a no fraud account. If the intention of the borrower was to deceive the bankers and was to have unusual gains, then it is classified as fraud. जैसे मैंने आपको शुरू में I've given you an example in starting regarding solar power plant. In that case, it was a case of a genuine business loss. Even though he is not able to repay the money to the bankers, it will not be classified as a fraud because it was an unintentional loss and not an intentional one. And let me tell you, if you are classifying any account as fraud, you should have clear-cut evidence for that it was done intentionally. Otherwise, your case will not sustain before the central CBI, EOW or SFIU. It will not sustain before that. उल्टा borrower आपके ऊपर केस कर सकता है. Borrower can file a case, defamation case against you that you have classified an account as fraud intentionally. So unless and until you have a conclusive evidence that this account is fraud, you cannot classify them as fraud. अब क्वेश्चन आता है, how as an auditor you will be able to verify the intention of the borrower. अब आप borrower के दिमाग में तो जा नहीं सकते. You cannot enter the minds of the borrower or you cannot preempt that what is he thinking or what is he not. As an auditor, the question comes, how will you identify that whether any act being done by the borrower was an intentional or an unintentional act? अब क्वेश्चन ये आता है. ठीक है सर, उसको अभी हम स्टडी करेंगे. वी विल स्टडी दैट विद द स्कोप ऑफ वर्क दैट बैंक्स प्रोवाइड अस. जैसे आई हैव टोल्ड यू इन स्टार्टिंग
कि किसी के डेटर्स खड़े हैं, उसने रिकवर नहीं करे, he has not taken any reasonable steps, and considering the nature of industry, he should have taken reasonable steps and tried to recover that money. This means he has intentionally not recovered his debtors, which is not in normal course of business. Hence, he has done this with an intent to deceive the bankers. Hence, the account may be classified as a fraud account. So on the basis of scope of work that is given to us by the bankers, you can decide whether it is done intentionally or unintentionally. इसका सबसे सिंपल तरीका है, the simplest thing is you put yourself into the shoes of the borrower. आप borrower की जगह आप खड़े हो जाइए कि भी अगर मैं borrower की जगह होता तो मैं क्या करता. What would I have done if I was in place of the borrower? If I would have done the similar thing that borrower has done, then it is a genuine business loss. But if I would have done something differently, then it is an intentional business loss. Proving the intent is the key. Fraud definition. जैसे मैं आपको fraud की definition भी पढ़वा देता हूँ. Fraud is an unlawful and intentional making misrepresentation with an intent to deceive and to defraud by causing actual and potential prejudice. ये Companies Act definition. Any act by any person with an intent to deceive against the interest of the company is fraud. Simple language में proving the intent is the key. You have to prove that the intention of the person was to defraud or deceive the bankers. I hope the definition of fraud is clear to you. ये सारी थ्योरी है. I'll give the presentation to the coordinator, वो आपसे शेयर कर लेंगे. अब इसमें एक चीज आती है fraud triangle. Those who have undertaken the FAFD course or have some understanding, they will be knowing what is fraud triangle. But for brief understanding, मैं इस पे 2-4 minutes, I'll take 2 minutes hardly to explain this, because you must have heard or you must have studied about this earlier as well. In fraud triangle, there are 3 aspects: opportunity, rationalization, and motivation. Whenever any fraud is undertaken, it will include any one of these things. तो होगी ही होगी. इन तीनों में से कोई ना कोई चीज जरूर होगी ही होगी. Either the fraud is undertaken because he had the opportunity, either the fraud is undertaken because he had the motivation, or the fraud is undertaken to rationalize something. Now, what do you mean by that? इसको एग्जांपल से समझते हैं. The Satyam scam, it happened. What was the reason for that? Because he had the opportunity to undertake such things. Now, what did that? He inflated his bank balance. He inflated his debtors. So he had the opportunity. Why he had the opportunity? He was the top management. So he was the one who was finalizing the financial statements. So he had the opportunity to undertake such fraud. Motivation. PNB Bank, Nirav Modi scam. Since the PNB official wanted to earn quick money, that's why he passed those entries in the banking system. Reason, he had the motivation to earn quick money. Rationalization. He would have tried to rationalize that this is my right to earn money. Rationalize means you are trying to justify an act. You are trying to say that जो मैंने करा वो सही करा. So whenever you will see any of these events, any of the fraudulent transactions, it will cover either of these 3 things, either the opportunity or motivation or rationalization. Now comes what is the difference between a forensic audit and a statutory audit. Sir, in today's scenario, according to me, there is no major variation between forensic and investigation statutory audit. Reason being the amount of amendments that have been made in CARO 2020. Well, if you see the amendments in CARO 2020, basically you are doing a forensic audit itself. Yesterday, I had a seminar in WARC on CARO 2020 itself. The listeners were shocked to see the amendments that have been made in CARO 2020. Well, they were saying that, sir, we will not sign our balance sheet in future if these many amendments are being made in CARO. So if you have gone through the amendments in CARO 2020, you will come to know the amount of amendments, the amount of changes that have been done in CARO and Schedule 3. So according to me, if you'll ask me, now there is no basic variation between normal audit and a forensic audit. But still, in today's date, I'll say for March 21, there was still some variation. What was that?
forensic audit is always done for period prior for previous years, whereas the statutory audit is always done for current period. It is done prior to issue of financial statements. So if you are sitting in March 22, then now we will do the statutory audit, after which the balance sheet will be signed. But in case of forensic audit, we will do audit for previous 3, 4, 5 years, whatever time is whatever the scope is provided to us by the bankers. Secondly, while doing a normal audit, statutory audit, we don't have any assumption that fraud has happened. According to us, everything is fine, everything is good. But in forensic audit, our assumption is that fraud has taken place. It is our assumption कि इस कंपनी ने पक्का कुछ ना कुछ fraud जरूर करा होगा. That's why the account has been classified as an NPA. The purpose of forensic audit is to reach a legal decision. We have to reach a legal decision as to whether what action is to be taken. Whereas statutory audit is undertaken for undertaking a financial decision. कि इस company में invest करे ना करे, for the purpose of investor, whether the company is working well or not. So all those things are there. Now we come to our main scope. What is the scope of work that is given to us by the bankers? अब हम इस पे सर 1 घंटा लगाएंगे कम से कम. We'll discuss the complete scope that is given to us by the banks, and we'll discuss point by point discussion. जब आप ये scope, when you will go through the scope, you will come to know that they have covered the complete balance sheet by which we are auditing that company. So we'll discuss the complete scope that is given to us by the banks to undertake such audit. अगर यहाँ तक अभी तक किसी की कोई query है, they can write it in the chat box. I can see the queries about the forensic audit, fraud. If there is any query, let me know. Otherwise, we will start with the scope of forensic audit. ठीक है सर, अभी हम शुरू करेंगे इसको फिर. स्कोप ऑफ फोरेंसिक ऑडिट. सर सबसे पहला पॉइंट हमारा आता है tracing the source and genuineness of contribution by the promoters with respect to equity, with respect to promoters by analyzing equity, debt infused by promoters and partners. ठीक है सर. You have to understand, जैसे मैं आपको इसे examples, I'll try to explain it to you through an example. एक query आई है where we have to get ourselves impelled to get the assignment. ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगा ताकि आप end of the session तक मेरे साथ रहें. तो tracing the source and genuineness of contribution by the promoters. In this, we have to identify whether the contribution by the promoters is genuine or not. Now the question comes, how will you identify the source and genuineness of contribution? I don't know whether you can unmute yourself or not. If you can unmute, मैं चाहूंगा कोई मेरे को बताए the meaning of first point. What will you, how will you verify the first point? आप इसमें क्या check करेंगे? If you can unmute yourself, you can unmute and tell me कि how will you, what do you understand by the first point and how will you verify it? इसके अंदर हम क्या करेंगे सर? First and foremost, we will take the bank statement of promoter. अब क्या है, एक कंपनी है, ठीक है, एक कंपनी ने एक प्रोजेक्ट लगाना है. They have to set up a factory for manufacturing mobile phones. You have to set up a factory for manufacturing mobile phones. तो हमने क्या करा? We approached the banks, said to give us a loan of 100 crore rupees. Sorry, we approached the bank to give us a loan of 80 crore rupees. The total project cost is 100. Bank says कि 100 में से 80 I will give you and 20 you bring in form of promoter contribution. Now the banks want to know whether the source and genuineness of contribution by promoter is genuine or not. How as an auditor you will verify that? Many a times our client also comes to us to give certificate of promoter contribution. आपके clients भी must be approaching you, sir, please provide the promoter contribution certificate. Do not sign that certificate unless and until you have verified the source of contribution. Now, what do you mean by source of contribution?
For an example, there is a company A. कंपनी ए में दो डायरेक्टर्स है बी एंड सी. कंपनी ए है, the husband and wife are director. B is the husband and C is wife, and they are director in company A. B and C introduce 10 crore rupees into company A. Now, how as an auditor you will verify the source of contribution? What you will do, you will take the bank statements of B and C to identify from where the funds were infused in these companies. ठीक है सर. उस केस में क्या होगा सर? अब सपोज करिए बी के पास जो पैसा आया है, द फंड्स द बी हैज रिसीव्ड इज फ्रॉम हिज सन. So what will happen? What will you do now? You will take the bank statement of his son to identify from where his son got money. Suppose from his son, the son received money from his wife. Then you will ask for the statement of his son's wife. So question comes, till what level we will go? Sir, we will go till we find an unrelated party. Because the unrelated party is not bound to give us their bank statements. So till we find an unrelated party, we will go till that level, and still we will write in our report that since the bank statement of these parties is not available, we are unable to verify the further source of funds. Why I'm telling you? I'll give you a very classic example which has happened with me. I was a forensic auditor in one of the company, and I'll tell you what had happened with the auditor who had given the promoter contribution certificate. उनके साथ क्या हुआ था? एक कंपनी थी, कंपनी ए, उसका एक क्रेडिटर था सी और उसका प्रमोटर था बी. So there is a company A, it has creditor C and it has promoter B. What happened? Company A paid funds to company C as creditor. He purchased goods and paid it to C. C paid such funds to B, and B again infused back these funds in form of promoter contribution. Sir, this is not a promoter contribution, but this is just round tripping, whereby funds have gone from company to C, C to B, and back to A. So this is not a case of a genuine promoter contribution. This was just round tripping, whereby funds were being sent to the creditors by showing fake purchases. The creditors were in turn paying such money to B, and B was in turn paying such money to A. Now I'll tell you what had happened with the CA who had signed the promoter contribution certificate. We wrote in our report that the promoter contribution is not genuine and it is just round tripping of funds. What the bank did, they gave an advertisement, they gave a note in the newspaper of that state, of the regional newspaper of that state, whereby they stated that this company has undertaken fraud in compliance with the statutory auditor or the person who has given the certificate, or they have written the name of the auditor and his firm in newspaper. I'm telling you that these companies and the auditor has undertaken fraud with the banks of this amount. This is to what extent the banks went. Even though the case was pending before investigation, it was pending before CBI, still the bank gave such a note in the newspaper. So as an auditor, it is very important for you. You should understand the nature of assignment you are doing. If you are issuing any promoter contribution certificate, please do not issue such certificate unless and until you have the source and genuineness of contribution. You should have complete trail of funds from where the funds came into promoters, which has been infused into the company. I hope the first point is clear regarding promoter contribution. If you have any queries regarding the same, you can ask me regarding promoter contribution, tracing the source and genuineness of promoter contribution. ठीक है सर. अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे. Now we'll come to our second point, verifying revenue from operations, and इसका third point है हमारा receivables का. So in this we will discuss sales, purchase, debtors and creditors. इसमें हम पूरा चारों चीजें will cover in this, so that all things are interlinked with each other, so that you will have an understanding of all these four topics together.
sales, purchase, debtors and creditors. Now the question comes, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, आई विल टेल यू कि अगर आपकी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग है, how will you audit? If your company is into trading sector, what will you do? If your company is into service sector, hotel sector, what will you do? Suppose for an example your company is into manufacturing sector. We'll start from scratch. हम पूरा discuss करेंगे कि how will you undertake the audit for such company. Your company is in the business of manufacturing. Suppose आपकी कंपनी मोबाइल फोन्स मैन्युफैक्चर करती है. Your company manufactures mobile phones. तो उस केस में क्या होगा सर? There will be a manufacturing unit that they might have set up somewhere in a factory. तो उस केस में आप क्या चेक करेंगे? So मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में आप क्या चेक करेंगे सर? In case of manufacturing industry, first and foremost, as per me, you should check the gate pass register. मैं अपने हर सेमिनार में बोलता हूँ सर, आपको गेट पास रजिस्टर चेक करना चाहिए while verifying in the manufacturing industry. उसका रीजन मैं बताता हूँ सर. See, in today's scenario, preparing invoices, preparing transfer receipts, preparing GR, pay slips is very simple. वो एक बुकलेट ले ले, वो छाप ले और वहीं पे बैठ के बिल काट ले. But preparing gate pass register is one of the most tedious jobs. Reason being, उसमें आपको लिखना है कि कौन सा ट्रक आया, कितने बजे आया, at what time it came, what was the item that it was carrying, who was the driver, mobile number of the driver, and at what time the truck left the factory with what items, what was the truck number, what was the weight, what was the driver's name, what was the mobile number. So there is at least 10 to 15 items that are to be provided in gate pass register. And no manufacturing industry can work without a gate pass register. कोई भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री गेट पास रजिस्टर के बगैर वर्क कर ही नहीं सकती. So if you are doing a statutory audit also of a manufacturing industry, please ask your client to provide you gate pass register first and foremost. Secondly, once you have verified the gate pass register, you have to verify the invoices, you have to verify the transportation documents and pay slips, whether the gate pass register tallies with the invoices that are provided to you by the management. आपको वो देखना पड़ेगा सर. तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में as per me the most important thing is gate pass register. सेकंड एग्जांपल पे आते हैं. सेकेंड एग्जाम्पल है ट्रेडिंग इंडस्ट्री का, कि ट्रेडिंग इंडस्ट्री में आप कैसे चेक करें. सर जनरली ट्रेडिंग इंडस्ट्री में कोई फैक्ट्री या कुछ नहीं होती अनलेस एंड अंटिल यू आर मेंटेनिंग स्टॉक. सो इफ यू आर ट्रेडिंग इनटू गुड्स, व्हाट यू विल डू, यू विल हैव अ परचेज ऑर्डर, यू विल हैव अ सेल ऑर्डर. जनरली हमारे पास सेल ऑर्डर पहले होता है, उसके बेसिस पे वी बाय प्रोडक्ट्स एंड सेल इट टू द पार्टी. तो ट्रेडिंग इंडस्ट्री में यू हैव टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, COGS रेशो. If your client is selling goods at a nominal profit, at a very low profit, there is a high chance that he is just routing the transaction and no actual business transactions are happening. क्योंकि अगर कोई बंदा नॉमिनल सपोज 100 रुपए का लेके 100.01 का बेच रहा है, he is selling it at a profit of 1 paisa. What is the purpose of doing business by selling your goods at such a low profit? So as a statutory order as well, if you are signing any balance sheet, you see that the goods are being traded at a very nominal profit. There is a high chance it is just book transactions and nothing else. There is a high chance that it is just a book transaction and nothing else. So if you are selling goods in trading industry, you have to calculate the gross profit margin or the COGS ratio, cost of goods sold ratio. Once you are able to identify that ratio, you can easily determine whether actual business transactions are happening or not. तो इसके लिए आपको बैलेंस शीट पढ़नी आनी चाहिए सर, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था. If you are able to understand the balance sheet, आपका 50% काम वहीं पे खत्म हो जाएगा सर. You will come to know कि हमको इस ऑडिट में देखना क्या है. I have done so many audits. अगर आप if you keep any balance sheet in front of me, I am confident that in out of 10, 5-6 cases में I will tell you कि भाई इसमें ये fraud हुआ है या ये fraud हो सकता है.
In 60% cases, I can tell you that this is the fraud that might have happened in this company. On the basis of balance sheet only, I'm telling you. That will come once you know how to read and study a balance sheet. That's why I'm telling you these things. मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में मैं आपको एग्जांपल बताता हूं. मैंने एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को ऑडिट करा. जब उसकी सेल 100 करोड़ रुपए थी. आई होप if I can talk in Hindi as well. There is no issue with anyone in Hindi. If anyone has any issue in Hindi, please write me in the chat box so that I'll communicate in English only. Otherwise, I'll include Hindi and English both. मैंने एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ऑडिट करा whereby the sale was 100 crores and the power and fuel expenses were 10 crores in comparison to 100 crores of sale. After 2 years, the sale increased to 200 crores, but power and fuel expenses reduced to 5 crore rupees. So when we verified the balance sheet and further things, we came to know that instead of undertaking manufacturing activities, the borrower was undertaking trading activities after 2 years. And the sanction letter had specifically mentioned that debtors will only be allowed against manufacturing debtors and not trading debtors. That debtors will be allowed only against the manufacturing debtors and not trading debtors. So ये चीज के लिए I guess you do not need any software. You should have understanding of the balance sheet and you must have read the sanction letter. तो अगर 100 करोड़ की सेल पे 10 करोड़ रुपए पावर एंड फ्यूल है और 200 करोड़ की सेल पे 5 करोड़ पावर एंड फ्यूल है, then in that case how can we undertake that audit? Well, how can they manufacture goods? It is just a trading thing and nothing else. So जैसे I have told you of manufacturing, trading के केस में your main expenses that can happen is your transportation expenses. Reason being, you are purchasing goods from someone and you're selling it to them. There is no manufacturing, nothing. So the power and fuel expenses should be minimal. There can be staff cost, which should also be minimal. There should not be any major cost related to workers because you are just trading in goods. You are buying and selling it to someone else. तो जब आप बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस को देखेंगे, you will come to know that what expenses should be incurred in such an industry. Third example, hotel industry. जब भी आप, whenever you undertake any audit for hotel industry, let me tell you what happens in hotel industry. Sir, hotel industry में always 2 softwares are maintained. I'm currently doing audit for around 3 to 4 hotels in Delhi itself. Forensic audit I'm doing. We're having limits of 200, 300 crores. Hotel industry में they always maintain 2 softwares. One is a software that is at the reception. Reception पे जो guest की पूरी डिटेल जाती है. And second software is the one in which they write their books of accounts. जिसमें वो books of accounts mention करते हैं. ठीक है सर? जिसमें वो books of accounts mention करते हैं. तो when you will do any forensic of hotel industry, what you have to do, आपको अपने क्लाइंट को बोलना है कि सर अपने रिसेप्शन का डाटा निकाल के दीजिए, द डाटा ऑफ गेस्ट यू आर मेंटेनिंग एट रिसेप्शन. अब रिसेप्शन पे वो क्या क्या डाटा मेंटेन करते हैं? कस्टमर का नाम, मोबाइल नंबर, गवर्नमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर, email ID and the room number that is allotted to him, check in, check out date. These are the information that are maintained in the reception database. तो जब मैंने अभी एक किसी कंपनी को ऑडिट करा, when I undertook an audit of forensic audit for one of the hotel industry, I observed that the hotel has 1000 entries in his Excel file. When I got the data of reception, I observed for in 1 month there were 1000 guests. Out of 1000 guests, 300 had common mobile number. Even though the names were separate, they had common mobile number. And when we verified that mobile number, we came to know it was mobile number of one of the staff of the hotel only. It is highly improbable that at the time of check-in, they will put their own mobile number in the database of the customer. It is highly improbable. It can happen in 2% cases, 3% cases, but not 30% cases. Secondly, out of those 300s, 200s were one which did not have government identification number itself. This clearly shows they were overstating their customers' guests by 200 to 300 guests, whereby their actual
Footfall was 600, 700, but they were showing it as 1000. This is regarding hotel industry. Now I'll come to jewelry industry. In jewelry industry में आप क्या check करेंगे sir? The jewelry industry is one of the most difficult industry to audit. Let me tell you. जब आप audit करेंगे आपको पता लग जाएगा. Reason being, they only have sales invoices and nothing else. Maximum they can have good receipt note, nothing else. Reason being, there is no transportation documents. Reason, again, you don't need to know the reason, because it is a high value item. Either the customer will come to your shop, or you will hand over the goods by hand to that customer at their premises. तो उस केस में आपको ट्रांसपोर्टेशन डॉक्यूमेंट मिलेंगे ही नहीं, ज्वेलरी के केस में. Now, what do they do in jewelry industry? Generally, as soon as their account is classified as an NPA or is going to be classified as an NPA, what they do? They reduce their stock to nil. Reason being, as soon as the account is classified as an NPA, banks will come to their showroom and ask them to hand over the stock. So generally, जितने भी ज्वेलर्स होते हैं वो सारा स्टॉक अपना नील कर देते हैं. They reduce their stock to zero as on the date of NPA, and they have debtors in their balance sheet. You have to verify the debtors thoroughly in jewelry industry, क्योंकि उसमें जो मेजर एक्सपेंसेस होता है ज्वेलरी में, दैट इज ऑफ जॉब वर्क. जैसे उसको गोल्ड को पिघला के दे हैव टू मेक नेकलेस, दे हैव टू मेक रिंग्स, दे हैव टू मेक इयररिंग्स, व्हाटएवर दिस थिंग्स आर, वो बेसिकली जॉब वर्क एक्सपेंसेस चलते हैं उस केस में. तो उस केस में, बिकॉज जॉब वर्क इज अ वेरी अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, यू विल नॉट बी एबल टू क्वेश्चन द एक्सपेंसेस बुक्ड बाय देम विद रिस्पेक्ट टू जॉब वर्क. बट द मेजर थिंग दैट यू हैव टू वेरीफाई इन ज्वेलरी इंडस्ट्री इज द डेटर्स दैट आर आउटस्टैंडिंग. That how do we verify whether those debtors are genuine or not? In that case, you have to verify whether effective legal steps have been taken or not to recover such money. Why such debtors are not paying that money? Thirdly, in jewelry industry, what they do currently, like they are valuing their gold at a rate of, suppose currently it is 55,000 per 10 grams. So before the date of NPA, they will value their stock at 55,000. But when after the count has been classified as an NPA, they will sell the goods at 40,000, 35,000, whatever the rate case it may be. So they are undervaluing their debtors by selling that at a cheap rate. तो ज्वेलरी इंडस्ट्री का जब आप ऑडिट करेंगे, आपको उनसे स्टॉक रजिस्टर लेना जरूरी है सर. स्टॉक रजिस्टर, इन दैट स्टॉक रजिस्टर यू शुड हैव ओपनिंग बैलेंस, whereby you have the units and the values, purchases, consumed, sales, and closing balances. If you have a detailed stock register, you will be able to identify whether in actual sale transactions have been made at arm's length or not. अगर उन्होंने रेट गिरा दिया या उन्होंने सेल कम रेट पे करी है, then it is an undervalue transaction. I hope this point is clear, that it will be classified as an undervalue transaction. मैं आपको एग्जांपल देता हूं. I'll give you an example of rice industry now. मैं आपको rice industry का एग्जांपल देता हूं. After that, I'll give you an example of infrastructure industry. I'll share you as many examples as I can, so that whenever you are doing any statutory audit or whenever you are doing any forensic audit, you should have an understanding of that industry. कि उस इंडस्ट्री में आपको जाके चेक क्या करना है. Unless and until you know कि हमको चेक क्या करना है, आप ऑडिट कर ही नहीं सकते सर. I will give you an example of rice industry. Rice industry में क्या होता है, जब भी बैंक फंडिंग करता है, whenever the banks fund the borrower, the funding is done only for the manufacturing part, because the funds are being disbursed for setting up a factory. So whenever you will go through the sanction letter of any company which is into manufacturing of rice, 90% cases it will be specified that debtors will only be allowed against manufacturing debtors. Rice industry में क्या होता है, the borrower purchases paddy, उसको वो boilers में डालता है, boilers में डाल के they manufacture rice. So whenever you will compare the rice industry, you have to check the consumption versus production ratio.
तो जब आप मैन्युफैक्चरिंग की राइस में बात करेंगे, you have to verify the percentage of consumption of paddy versus percentage of production of rice. Similarly, sugar industry में you have to verify the percentage of consumption of sugarcane versus the percentage of production of rice, sugar, and percentage of production of molasses. Molasses is the waste which is used by them further for breweries industry. तो आपको प्रोडक्शन वर्सेस कंजम्पशन रेशो को चेक करना पड़ेगा इन केस ऑफ दीज इंडस्ट्रीज दैट आई एम टॉकिंग अबाउट. This is not applicable for all the manufacturing industries. It is specifically mentioned whereby there is a ratio which is to be verified for consumption versus production. Third example, infrastructure industry. Infrastructure industry में जब जैसे मैं एग्जांपल दूं, your company is into setting up roads, developing roads and flyovers. उस केस में सर आप क्या चेक करेंगे? If your company is into developing roads and flyovers or other infrastructure projects. सर उस केस में दो चीजें होती हैं. If your company is into manufacturing or developing roads, flyovers or any infrastructure project, first and foremost what you have to verify is you have to verify the project cost. 90% केसेस में इन कंपनीज में जो फ्रॉड होता है वो होता है प्रोजेक्ट कॉस्ट पे. प्रोजेक्ट कॉस्ट पे वो फ्रॉड होता है 90% केसेस में. लेट मी टेल यू. अब क्या फ्रॉड होता है सर? मैं अपना प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूं. मैंने अभी एक ऑडिट करा जिसमें टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट वाज 900 crore. What happened? The company subcontracted such contract to an EPC contractor. जनरली इस केस में वो होल्डिंग कंपनी ही होती है EPC कॉन्ट्रैक्टर. तो मैंने क्या करा, मैंने अपनी होल्डिंग कंपनी को ही कॉन्ट्रैक्ट दे दिया टू डेवलप द रोड फॉर 700 crore रुपीस. तो जो प्रोजेक्ट मैंने 900 crore में उठाया, सिमिलर प्रोजेक्ट हैज बीन सब कॉन्ट्रैक्टेड बाय मी टू माय होल्डिंग कंपनी फॉर 700 crore. ठीक है, तो 200 crore रुपए तो सीधा सीधा यहीं पे निकल गए. डन. When I went through the contract of holding company, the holding company had further subcontracted it to two more companies for 500 crore on same terms and conditions on which it had received the contract from the original allottee. तो 900 crore की प्रोजेक्ट कॉस्ट घट के होगी 500 crore सीधा सीधा दो कॉन्ट्रैक्ट्स में. और जो दो कंपनीज को 500 crore का कॉन्ट्रैक्ट मिला है, दे मस्ट बी आल्सो अर्निंग समथिंग. तो इन एक्चुअल द प्रोजेक्ट कॉस्ट शोन टू द बैंकर्स वाज 900 crore, बट इन एक्चुअल द प्रोजेक्ट कॉस्ट वाज 450 crore. उन्होंने डबल कर रखी थी प्रोजेक्ट कॉस्ट. सो एज एन ऑडिटर यू हैव टू वेरीफाई द प्रोजेक्ट कॉस्ट. अब इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी में जनरली क्लाइंट से कहेंगे, आपको बिल्स ला के दे देंगे, ये देखिए सर हमने रोड में इतना रोड़ी डाला, इतना मलबा डाला है हमने. एज एन ऑडिटर आप वो वेरीफाई नहीं कर सकते अगर रोड बनी हुई है. इफ द रोड इज ऑलरेडी डेवलप्ड, यू कैन नॉट वेरीफाई हाउ मच ऑफ थिंग्स दैट इज सेइंग हैज गॉन इनटू रोड और नॉट. आप रोड तोड़ के तो देख नहीं सकते सर. So उसमें क्या होता है, those things cannot be verified by you conclusively, hence you will never be able to comment. You can waste as much time as you can in verifying those things, but 90-95% केसेस में आप उसमें कुछ नहीं ढूंढ पाएंगे because वो आपका forte नहीं है. You are not an expert in that. Your expertise is identifying the project cost. So this is for the infrastructure industry. तो अगर आप इन सारी चीजों को देखेंगे, अब मैं आप और कौन सा एग्जांपल मैं आपको बताऊं. इंपोर्ट इंडस्ट्रीज. इंपोर्ट जो करते हैं, जैसे बाहर से कंपनी से आप इंपोर्ट करते हैं, अगर आपकी कोई कंपनी इंपोर्ट करती है बाहर से गुड्स, इफ योर कंपनी इज इंपोर्टिंग गुड्स फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी दैट इट माइट बी अगेंस्ट लेटर ऑफ क्रेडिट. इंपोर्ट लेटर ऑफ क्रेडिट, इनलैंड लेटर ऑफ क्रेडिट, तो एलसी अगेंस्ट हो सकता है इंपोर्ट.
उस केस में क्या होगा सर? उस केस में आपको ये देखना है वेदर द गुड्स हैव बीन एक्चुअली बीन इंपोर्टेड इनटू इंडिया और नॉट। उसके लिए एक वेबसाइट है इनकी, आइस गेट करके एक वेबसाइट है गवर्नमेंट की, whereby if you will enter the bill of entry number, the shipping bill number, you will identify whether import या export हुआ है या नहीं हुआ है। IceGate is a government website, ICEGATE. So whenever you will put the shipping bill number, आपको उसमें पता लग जाएगा कि एक्चुअल में वो सामान इंपोर्ट या एक्सपोर्ट हुआ है या नहीं हुआ है। So by that way you will be able to identify such import and export of transactions. तो अगर आप किसी इंडस्ट्री का ऑडिट कर रहे हैं विच इज इनटू इंपोर्ट ऑफ गुड्स, यू कैन वेरीफाई सच ट्रांजैक्शंस फ्रॉम ऑनलाइन गवर्नमेंट पोर्टल टू आइडेंटिफाई वेदर दीज ट्रांजैक्शंस आर जेन्युइन और नॉट। सर्विस इंडस्ट्री का मैं आपको एग्जांपल देता हूं। वी डिड एन ऑडिट फॉर एन आईटी कंपनी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी। इट वाज इनटू मैन्युफैक्चरिंग सॉफ्टवेयर्स। उन्होंने क्या कर रखा था सर? सर्विस इंडस्ट्री में द मेन योर एसेट इज द इंटेंजिबल एसेट, इट इज अ सॉफ्टवेयर। व्हाट दे डिड वाज they gave their right to use after the account was classified as an NPA. They transferred the right to use of the software to another company for 99 years at a very nominal cost, at a very nominal cost, so that their main asset, the intangible asset, could not be attached by the bankers. आपको पता है सर किंगफिशर का जो हुआ था, किंगफिशर में जो उसका लोगो है, बर्ड का लोगो है, one of the agency had valued it at 3200 crores and one of the valuer had valued it at 1800 crores. This was the variation in the valuation of that bird. I'm talking about the small bird of kingfisher in the logo. उसी में 1400 करोड़ का वेरिएशन निकल आया था सर। उसके और केस लॉज में काफी कंडीशंस है, काफी चीजें हैं, you will go through that. So the valuation of that bird had a major variation in their valuation. तो अगर आप यू आर ऑडिटिंग एनी ऑफ दैट सॉफ्टवेयर कंपनी इनटू सर्विस सेक्टर कंपनी, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई वेदर दे आर बुकिंग देयर रेवेन्यू जेन्युइनली और नॉट। उसमें सर क्या होता है, उसमें एक आता है इनटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। अगर आपकी कंपनी सॉफ्टवेयर में है, what they do, they try to overstate their revenue by percentage of completion method by overstating their software that has been developed. So you as an auditor have to see whether the software to that extent has been developed or not. So ये सारे मैंने आपको examples बताए of hotel industry, manufacturing, trading industry. So unless and until you know about the nature of industry, you will never be able to audit that company. Let me tell you. आपको पता ही नहीं लगेगा कि आपको चेक क्या करना है. Once you know what is to be verified, how it is to be verified, then only you will be able to undertake such audit. नेक्स्ट पॉइंट आता है रिगार्डिंग डेटर्स। सपोज आपने अपनी सेल्स परचेज पूरी वेरीफाई कर ली, उसमें आपको कुछ नहीं मिला, द डॉक्यूमेंटेशन इज प्रॉपर, दे हैव ऑल द गेट पास रजिस्टर्स, दे हैव ऑल द मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग डॉक्यूमेंट्स, दे हैव द गुड रिसिप्ट नोट, एवरीथिंग इज अवेलेबल इन दैट. सो वी हैव कवर्ड सेल्स एंड परचेजेस वेयर बाय दे हैव ऑल द डॉक्यूमेंट्स. होटल इंडस्ट्री में वो आपको सारी चीजें प्रोवाइड कर दी, गेस्ट की लिस्ट, एवरीथिंग इज करेक्ट, एवरीथिंग इज डन. Now the second steps comes verification of debtors. In forensic audit, in 90% of cases, your main focus should be on debtors and stock. Reason being, that is the primary security of bankers while sanctioning their limits. Sir, banks जो होते हैं generally दो तरह की limit sanction करते हैं. Either it is a fund-based limit or a non-fund-based limit. In case of fund-based limit, it can be a CC limit or it can be a term loan. So CC limit के केस में the primary security is stock and debtors. In today's scenario, around 60 to 70% of loans are in form of cash credit limit. This case में the primary security is stock and debtors. Hence, as an auditor, as a statutory auditor or as a forensic auditor, it is very important for you to verify these things, verify the stock and debtors. जब तक आप उनको verify नहीं करेंगे, you will never come to know कि whether the transactions are genuine business transactions or not. अब डेटर्स पे आते हैं सर, डेटर्स में आपको क्या क्या वेरीफाई करना है.
You have to identify reciprocal receivables. Let's read the third point. Verifying receivables. Receivables should be verified thoroughly with a view to unearth reciprocal receivables against each other of related parties, fictitious debtors, inflated debtors, already realized debt, disputed debts, unacknowledged debts. अब ये सारी टर्म्स क्या है सर? एक मिनट सर, एक मिनट, जस्ट होल्ड ऑन, लाइट चला रहा था। अब ये सारी टर्म्स क्या है सर? सर whenever you will identify any asset receivables, आपको देखना है whether those are genuine or not. So first and foremost you have to bifurcate the receivables into related parties and unrelated parties. अगर आपने कारो का लेटेस्ट फॉर्मेट देखा होगा सर किसी ने, कारो 2020 का, now your aging analysis of trade payables and trade receivables both is to be given. आपको दोनों की एजिंग एनालिसिस देनी है सर, ट्रेड पेबल और ट्रेड रिसीवेबल दोनों की। और उसमें क्या एजिंग है सर? ट्रेड रिसीवेबल्स की एजिंग एनालिसिस है अप टू 6 months, 6 months to 1 year, 1 year to 2 years, 2 years to 3 years and more than 3 years। और ट्रेड पेबल की क्या एजिंग एनालिसिस है? अप टू 1 year, 1 to 2, 2 to 3 and more than 3 years। So now in your balance sheet itself you have to give proper aging analysis. Further, trade receivables have been bifurcated into 4 parts now. Undisputed considered good, undisputed considered doubtful, disputed considered goods and disputed considered doubtful. These are the 4 headings in which your trade receivables are to be bifurcated. Further, your trade payables are to be bifurcated into 4 parts: MSME, others, MSME disputed, others disputed. तो अब आपको सर पूरी बाइफर्केशन देनी है बैलेंस शीट में रिगार्डिंग ट्रेड रिसीवेबल्स. So now as an auditor, when you are identifying, when you are verifying trade receivables, you will get a lot of information from balance sheet itself. सेकेंड केस आता है रिलेटेड पार्टीज का. सर रिलेटेड पार्टीज में आई विल जस्ट स्टॉप माय स्क्रीन, आई हैव टू शो यू समथिंग. मैं एक मिनट, मैं आपको कुछ दिखाता हूं. यहां पे वो कहते हैं रिसीवेबल्स रिलेटेड पार्टीज. हाँ जी सर. सर रिसीवेबल्स की जो रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन है, that is to be taken from your AS 18 India's 24 Companies Act और इनकम टैक्स एक्ट, whatever the case में भी आपको रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन वहां से देखनी है टू आइडेंटिफाई रिलेटेड पार्टीज. बट while doing forensic audit you have to go beyond that. अगर आपने श्रेय, जो भी श्रेय का केस चल रहा है, SREI श्रेय, उसमें अभी मेरे ख्याल EY ने फोरेंसिक ऑडिट करा है. उसमें अगर आप उनकी रिपोर्ट या उनकी कंक्लूजन्स जो आई हैं वो पढ़ेंगे, उसमें आप देखेंगे दैट श्रेय हैज ट्रांसफर्ड फंड्स टू मेनी कंपनीज व्हिच माइट बी रिलेटेड टू श्रेय बिकॉज ऑफ कॉमन एड्रेसेस, कॉमन ईमेल आईडी. दे हैव मेंशन्ड दैट इन देयर रिपोर्ट. उसके लिए एक वेबसाइट है सर, zobacorp.com. ये मैंने खोली है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं. तो सपोज करिए मैंने एग्जांपल दिया रिलायंस का, रिलायंस लिमिटेड. इसके अंदर सर ये एड्रेस आया रिलायंस लिमिटेड का, ये वाला एड्रेस आया सर रिलायंस का. हमने क्या करना है, इसको कॉपी करना है. यहां पे एड्रेस का कॉलम खोल के इस एड्रेस को आप पेस्ट कर देना. ठीक है सर. अब इस एड्रेस पे देखिए सर, 22 कंपनीज हैव कम ऑन दिस एड्रेस. 22 कंपनीज. तो इस एड्रेस पे जो रिलायंस का एड्रेस है, रिलायंस लिमिटेड का एड्रेस है, उस पे 22 कंपनियां रजिस्टर्ड है सर. रिलायंस लिमिटेड, रिलायंस एम्यूनेशन लिमिटेड, अनलिमिट आयोड, एटलांटा, रिलायंस ऑर्नेटस, रिलायंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, अनिल धीरूभाई अंबानी. तो ये सारी कंपनीज 22 की 22 कंपनीज रिलायंस के एड्रेस पे रजिस्टर्ड है. So while doing forensic audit, you have to mention such fact in your report. If you are verifying the trade receivables, you are verifying the trade payables,
and you come across a company, even though it is not related as per accounting standard 18, but still due to common addresses or common email ID, you have to provide that thing in your report stating that since these companies have common addresses to the borrower company, these might be indirectly related to the borrower company and needs further verification. आपको वो पॉइंट अपनी रिपोर्ट में लाना पड़ेगा सर. बाय चांस किसी का कॉमन ईमेल आईडी भी है, जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूं रिलायंस की, अगर ये ईमेल आईडी है, यहाँ पे रिलायंस लिमिटेड का ईमेल आईडी आ गया सर, ये Reliance Limited PL@gmail.com. So if you find any company with similar email ID, then there is a high percentage of chance that these companies might be indirectly related to Reliance Limited. I hope this part is clear. तो आपको you don't have to restrict yourself only to the definition of related parties as per accounting standard. You have to go beyond that. जैसे कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील, कि हमको कॉर्पोरेट व्हील को लिफ्ट करके देखना है कि एक्चुअल में बैक एंड पे कौन है, हु इज द वन हु इज मैनेजिंग द कंपनी, हु इज द वन हु इज ऑपरेटिंग द कंपनी. फॉर दैट यू विल हैव टू लिफ्ट द कॉर्पोरेट व्हील. मैं आइसगेट वाली भी वेबसाइट आपको दिखा देता हूं एक बारी. ये गवर्नमेंट वेबसाइट है आइसगेट की. यहां पे जाके आप इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं. इसमें था यहाँ पे जाके आप आई कोड डाल के आप इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं सर. ड्रॉबैक इंक्वायरी है, यू कैन चेक द आई कोड, आईसी कोड, समरी वाइज रिपोर्ट. सो यू कैन चेक कि शिपिंग बिल और बिल ऑफ एंट्री वाला जो है वेदर एक्चुअल में इंपोर्ट एक्सपोर्ट हुआ है नहीं हुआ. दिस इज अ गवर्नमेंट वेबसाइट icegate.gov.in. दिस इज अ गवर्नमेंट वेबसाइट जहां पे यू कैन आइडेंटिफाई वेदर इन एक्चुअल एक्सपोर्ट इंपोर्ट हैज टेकन प्लेस और नॉट. और ये मैंने आपको बताया दिस ज़ोबा कॉर्प इज अ वेरी यूजफुल वेबसाइट बिकॉज एमसीए पे आपको एड्रेस के हिसाब से सॉर्टिंग नहीं मिल पाती. मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट पे आपको डायरेक्टर्स मिल जाएंगे, कंपनी का नाम मिल जाएगा, बट एड्रेस के हिसाब से सॉर्टिंग नहीं हो पाती उसमें. सो एट ज़ोबा कॉर्प if you enter any address you will come to know the companies that are registered on such address. So if many companies have, जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, मैंने एक कंपनी को ऑडिट करा था सर जिसके अंदर उस कंपनी ने 850 कंपनीज के अंदर इन्वेस्टमेंट करी हुई थी. द कंपनी हैड मेड एन इन्वेस्टमेंट इन 850 कंपनीज ऑफ 3000 करोड़ रुपीज. When we verified those 850 companies, we observed that out of 850 companies, 400 companies had similar address. 400 कंपनियों का सेम एड्रेस था, कैलकाटा का एड्रेस था कोई. तो जब मैंने अपने स्टाफ को भेजा फिजिकली वेरीफाई करने के लिए, we observed that was a very 10 by 10 की एक छोटी सी दुकान थी जिसपे शटर लगा हुआ था. It was a very small shop, a very small office which had a shutter on it and nothing else. So 400 companies were registered on such a small shop. Hence, as an auditor, you have to go beyond the definition of accounting standard. You have to go beyond the definition of Ind AS to identify whether in actual the business transactions are undertaking place or not. तो आपको आइडेंटिफाई करना है रिलेटेड और अनरिलेटेड पार्टीज को. सर फिक्टिशियस डेटर्स, जैसे मैंने शुरू में आपको बताया था, यू हैव एन आउटस्टैंडिंग डेटर्स बट यू हैव नॉट टेकन एनी रीजनेबल स्टेप्स टू रिकवर सच मनी. You have not sent them legal notices, you have not filed case against them in the courts, or you have not filed case against them in the NCLT, which clearly questions your intention to recover such money. That you are not recovering your money. Inflated debts. Inflated debt कैसे है सर? आपने अपने डेटर्स को इन्फ्लेट कर रखा है. हाउ? बाय इन्फ्लेटिंग योर सेल्स. उसके लिए यू विल हैव टू सी द स्टॉक रजिस्टर. आपको स्टॉक रजिस्टर को वेरीफाई करना पड़ेगा. उसके लिए स्टॉक रजिस्टर में आप कैसे वेरीफाई करेंगे? सपोज फॉर एन एग्जांपल, ये मोबाइल फोन को मैं मार्केट में बेचता हूं 30,000 का. आई एम अ मोबाइल फोन डीलर.
I sell goods to the related party at 30,000 in market for 30,000 और मैं अपनी related party को यही मोबाइल फोन बेचता हूँ 50,000 का. उसका रीजन क्या है? I am inflating my sales. My transaction is not at arm's length, whereby I am inflating my sales and I am inflating my debtors. कि मैं अनरिलेटेड को तो 30,000 का बेच रहा हूं, बट अपनी रिलेटेड पार्टी को उसको 50,000 का बेच रहा हूं टू इन्फ्लेट माई डेटर्स. वो आपको कैसे पता चलेगा? When you will review the stock register of the company. Once you review the stock register, you will come to know whether the transactions are being undertaken at arm's length or not. Already realized debts. इसका क्या मतलब हुआ सर? That the debtors are telling that they have already paid that money to me, but that are not coming into the books of accounts. How can that happen? It can happen either they have paid in cash or they have paid the money, but the books of accounts have been manipulated, whereby the balance of these parties have not been adjusted. दोनों तीनों में से सर एक केस हो सकता है इसमें कि भी ऑलरेडी हमने डेट रियलाइज कर लिया, या हमको कैश में पैसा मिल गया, या फिर हमारे बैंक में तो पैसा आया बट हमने उसको डेटर से माइनस नहीं करा. Disputed debts, whereby already a legal case is pending before the courts and such dispute has not been disclosed by the management in their financial statements. उन्होंने अपनी फाइनेंशियल्स में उस डिस्प्यूट को डिस्क्लोज ही नहीं करा. So this is regarding the debtors I am telling you. तो आपको डेटर्स को वेरीफाई करने के लिए यू हैव टू सेंड देम कंफर्मेशंस कि why they are not paying you money. आपको उनको फिजिकली विजिट करना पड़ेगा सर, इफ द स्कोप परमिट. जैसे मैं आपको दिखाऊं, ये स्कोप में आप सेकंड पॉइंट पढ़िए सर, फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ मेजर डेटर्स. तो जनरली बैंक्स अपने स्कोप में ही लिख के दे देते हैं, यू हैव टू फिजिकली वेरीफाई द डेटर्स. नाउ हाउ एज एन ऑडिटर व्हाट यू हैव टू डू? Since you don't have the power of a government official, आपके पास पुलिस की पावर नहीं है, आप क्या करेंगे? You will go to the debtor, उनके एड्रेस पे जाएंगे, you will request them to provide you confirmation. If they provide you, well and good. If they don't provide you, you have to just come back and state in your report that we requested the debtor to provide confirmation. However, the same was not made available to us. Secondly, आपको उनकी premises की आप बाहर से फोटो खींच लीजिए, and that photograph you can attach in your report stating that we have visited this premises. However, the debtor has refused to sign the statement or confirmation letter. So this is how you will verify the debtors, the trade receivables. अगर यहां तक कोई आपको शेयर कैपिटल में, सेल्स परचेज में, डेटर्स क्रेडिटर्स में कोई इशू है, you can tell me. You have any query or not? तो पता नहीं सर आप लोग सब सुन भी रहे हैं, नहीं सुन रहे? ठीक है सर. वेरीफाइड ट्रेड पेबल्स, जैसे मैंने आपको ट्रेड पेबल्स का बताया था सर, क्रेडिटर्स को वेरीफाई करना है. उस केस में भी आपको अपने साथ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस को अंडरस्टैंड करना है. यू हैव टू अंडरस्टैंड द रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस, कि वेदर द रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस हैव बीन डिस्क्लोज्ड और नॉट. I'll give you an example for that. I did a forensic audit for a company which was a top 10 defaulter company. मैंने अभी एक audit करा. It was one of the top 10 defaulters of India. What happened? जब हमने उसकी बैलेंस शीट को वेरीफाई करा, we observed that 50 to 60% of sales and purchases were being made from one or two customers only. 60% of sales purchase transactions were being made from one or two persons only. तो उस केस में क्या हो रहा था कि majority of transaction, it was a case of sole customer and sole supplier. What do you mean by sole customer and sole supplier? Sole customer means a person to whom majority of sales are being made by us. Sole supplier means majority of purchases are being made by from such person. तो हमने जब ऑडिट करा, आई ऑब्जर्व कि भी एक ही कंपनी को हम सेल कर रहे हैं 50% सेल, और एक ही कंपनी से हम परचेज कर रहे हैं. When we further verified, we further dig into the documents, we observed that these parties were related parties. But
ऑडिटर ने अपनी बैलेंस शीट के नोट्स ऑफ अकाउंट्स में उसको रिलेटेड पार्टी में AS 18 में डिस्क्लोज नहीं करा हुआ था. They had not disclosed such amount under related party transaction. And उस कंपनी के सैंक्शन लेटर में स्पेसिफिकली इट वाज मेंशन्ड that drawing power will not be allowed against related party debtors. It was specifically mentioned. Since it was specifically mentioned, the auditor and the company intentionally did not disclose such parties under AS 18, by which they were claiming higher drawing power. Now, how as an auditor you will come to know these things? You will come to know these things only after you have an understanding of accounting standards. अगर आप forensic audit कर रहे हैं, you should have a very good understanding of accounting standards, Schedule 3, Companies Act. अगर आपको accounting standard की knowledge नहीं होगी, आप forensic audit नहीं कर पाएंगे. मैं आपको उसका एक example देता हूँ inventory का, जो हमने fraud ढूंढा था. एक कंपनी ने क्या करा था, सपोज फॉर एन एग्जांपल आई हैव अ कंपनी ऑफ अगेन ऑफ मोबाइल फोन्स. ठीक है सर, मैंने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मोबाइल फोन्स को दिखाया हुआ है. सो आई एम वैल्यूइंग माय स्टॉक ऑन फीफो बेसिस, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बेसिस. मैंने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में स्टॉक को फीफो बेसिस पे वैल्यू करा हुआ है. बट व्हेन आई एम सबमिटिंग माय स्टॉक स्टेटमेंट टू द बैंक्स, I am valuing them on weighted average basis. मैं बुक्स में तो उनको फीफो बेसिस पे वैल्यू कर रहा हूं, बट जब बैंक को मैं स्टॉक स्टेटमेंट देता हूं उसको वेटेड एवरेज पे करके दे देता हूं मैं. उससे क्या वेरिएशन आता है सर? क्वांटिटी तो सेम रहती है, बट वैल्यू में उसमें 50 करोड़ का वेरिएशन आ गया था. तो अगर मेरी बुक्स में स्टॉक 100 करोड़ आ रहा है, आई एम डिस्क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 150 करोड़ टू द बैंक्स बाय वैल्यूइंग इट ऑन वेटेड एवरेज बेसिस. Unless and until you have the knowledge of accounting standard 2, आप ये डिफरेंस निकाल ही नहीं पाओगे सर. जब तक आपको, क्योंकि उसमें क्वांटिटी सेम है, एक उसमें भी 100 मोबाइल फोन है, इसमें भी 100 मोबाइल फोन है. इट इज जस्ट द बेसिस ऑफ वैल्यूएशन दैट हैज चेंज्ड. So unless and until you have the knowledge of accounting standard 2 inventories, you will never be able to identify such difference. Similarly, accounting standard 9 revenue recognition. अभी मैं एक ऑडिट कर रहा हूं, रिसेंटली इट इज अंडर प्रोसेस. उस केस में क्या हुआ है सर? एक कंपनी है विच इज इनटू इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर. देयर इज अ कंपनी विच इज इनटू इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर. नाउ व्हाट हैज हैपेंड? द कंपनी इज इनटू इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर. मैं एग्जांपल ही भूल गया, AS 9 का. हाँ, तो कंपनी ने क्या करा, उसके कुछ केसेस आर्बिट्रेशन में चल रहे थे. Many of the cases of the company were going into arbitration due to non-completion of project. So what the company did, they recognized the revenue considering that arbitration award will be awarded in their favor. On the basis of filing of arbitration award, they have recognized that revenue in their books of accounts. Only on the basis of filing of arbitration award. No award has been passed, no decision has been taken in their favor, nothing. Only on the basis that we have filed arbitration award and we are hopeful that we will win the case, they have booked revenue in their books of accounts. As per accounting standard 9, unless and until there is a certainty that you will receive that revenue, you cannot recognize that revenue in the books of accounts. You have to show it as a contingent asset. As per AS 29, आपको उसको contingent asset दिखाना पड़ेगा. You cannot book it as a revenue in your books of accounts as per accounting standard 9. Accounting standard 10 का example देता हूँ. A company was valuing, उसमें क्या करते हैं सर, वो useful life change कर देते हैं. As you know, AS 10 specifies, the Companies Act specifies the useful life that you have to take of the asset. आपको उस asset की कितनी maximum useful life आप ले सकते हैं. कंपनी ने क्या करा, just to overstate their profit, अगर एक्ट में लिखा है 5 years is the maximum useful life you can take, they transfer it to 10 years. उन्होंने कहा नहीं, हमारे हिसाब से asset 10 साल चल जाएगा. They cannot do that. They cannot increase the useful life of the asset.
because of which the depreciation was being undercharged by 10 crore rupees, 20 crore rupees. And they were inflating their profit, showing a greenier picture to the bank so that the loans can be sanctioned to them. तो जब तक आपको AS10 की नॉलेज नहीं होगी, आप वो ऑडिट नहीं कर सकते. जब तक आपको AS2, AS9, AS16, AS26 intangible assets, AS18, AS21 कंसोलिडेशन. मैं आपको AS21 का एग्जांपल देता हूं सर, जो हमने देखा. एक कंपनी है, उसकी क्या थी, एंड दैट द कंपनी आई एम टॉकिंग अबाउट, इट वाज अ लिस्टेड कंपनी एंड द स्टैट्यूटरी ऑर्डर ऑफ द कंपनी वर वन ऑफ द टॉप फर्म्स. आई विल नॉट नेम वेदर दे वर एनी ऑफ द वन. They were one of the top firms in India and it was a listed company. You will be shocked to know what they were doing. उनकी एक कंपनी थी जिसके अंदर they had a, suppose the company is in Calcutta, they had a branch in Bombay. उस कंपनी की एक ब्रांच थी बॉम्बे में. तो बॉम्बे ब्रांच कुछ रॉ मटेरियल भेजती थी टू कंपनी इन कैलकाटा, द मेन कंपनी. So when they were consolidating both the books, what they were doing, वो 100 करोड़ का सेल्स और परचेज. तो कंपनी जो है, कंपनी ब्रांच के लिए दैट इज अ सेल, बट होल्डिंग कंपनी के लिए दैट इज द मेन कंपनी के लिए दैट इज अ परचेज. तो while they were consolidating the books of account, they did not net off the sales and purchases. उन्होंने वो 100 करोड़ को नेट ऑफ ही नहीं करा हुआ था सर किताबों में. तो जब आपको पता है when you ever you consolidate the branches, since branches is a one company, it cannot be identified as a separate entity. तो branch is an entity, is a part of the whole company. तो जब branch को हम consolidate करते हैं मेन कंपनी के साथ, तो all the inter party transactions are to be adjusted. उनको एडजस्ट करना पड़ता है. तो उस केस में क्या हो रहा था, वो एडजस्ट ही नहीं करा उन्होंने. एक तरफ 100 करोड़ सेल्स और एक तरफ 100 करोड़ परचेज को इन्फ्लेट करा हुआ था उन्होंने. दे वर इन्फ्लेटिंग देयर सेल्स एंड परचेजेस. सो अनलेस एंड अंटिल यू हैव नॉलेज ऑफ AS21, you will never be able to undertake that audit. AS22, deferred tax asset. Unless suppose a company is booking regular losses, still they are showing DTA, deferred tax asset. It is wrong as per AS22. If it is a permanent loss and you see that the company will never be able to book profits in future, the DTA has to be reversed by them. उन्होंने रिवर्स ही नहीं करा होता सर. All these falls under the definition of manipulation of books of accounts, and you can classify the account as a fraud account. आप उसको फ्रॉड अकाउंट क्लासिफाई कर सकते हैं सर. Reviewing the accounting policies, practices adopted by the company and comment on overall accounting system and controls, including internal control system, whether it is complying with the laws of land. जैसे मैंने अभी आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का बताया, it was regarding this our next point only. You should have understanding of the accounting policies. You should have understanding of the accounting standards and practices being followed by the company. मैं एक इंडस्ट्री का ऑडिट कर रहा हूं अभी. आई एम डूइंग देयर मॉनिटरिंग, आई एम डूइंग अ ऑडिट फॉर देम. उनकी पॉलिसी क्या है, उस कंपनी की पॉलिसी क्या है? दे वैल्यू देयर स्टॉक while submitting to the banks at 50% of market price. MRP जो होता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस जो होता है, वो क्या करते हैं, अगर उनका मैक्सिमम रिटेल प्राइस, सपोज उनका मैक्सिमम रिटेल प्राइस है 10,000, तो जब वो बुक्स में स्टॉक को, क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू करते हैं, दे वैल्यू इट एट 50% ऑफ मार्केट प्राइस. बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ इंडस्ट्री, दे आर नॉट एबल टू वैल्यू इट आइटम वाइज, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे आइटम्स, बहुत सारी चीजें लगती है, तो आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते. आपके लिए क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू करना बड़ा मुश्किल होता है. सो दे हैव एन अकाउंटिंग पॉलिसी दैट देयर क्लोजिंग स्टॉक विल बी वैल्यूड एट 50% ऑफ द मार्केट प्राइस. So now, unless and until you study their accounting policies, आपको पता ही नहीं लगेगा whether in actual वो correct है या नहीं है. तो कंपनी ने क्या करा एक साल में, उसने एक साल में पॉलिसी चेंज कर दी और उसके 50% को क्या करा, उसको कर दिया 60% एक साल में, विदाउट इन्फॉर्मिंग एनीवन, विदाउट इन्फॉर्मिंग
उससे क्या हुआ, उसका स्टॉक ओवरस्टेट हो गया सर, इन्वेंट्री was overstated, hence he was showing higher profit in 1 year by just changing an accounting policy, his internal accounting policy regarding valuation of stock. I hope you get that point, that you should have an understanding of the accounting policies, the accounting standard. You should have a very good understanding while undertaking any forensic audit. Next point आता है हमारा ascertaining money trail and end use of fund disbursed by the lenders. इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है whether the funds have been utilized for the purpose for which they were sanctioned. आपको इसमें ये चेक करना पड़ेगा. अब आप इसमें सर ये कैसे चेक करेंगे सर? Let me tell you, this is a very important point. Reason being, this similar point has now been incorporated in your CARO 2020. आपकी statutory audit report में point incorporate हो गया है, whether the funds have been utilized for the purpose for which they were sanctioned or not. It has been incorporated in CARO now. आपकी statutory audit report में. Hence, it is very important for you to study this point. इसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर आपको पूरी बैंक की एनालिसिस करनी पड़ेगी, बैंक अकाउंट की, कि बैंक में पैसा कहां से आया और कहां यूटिलाइज हुआ. फॉर दैट यू नीड टू नो कि कंपनी के बिजनेस एक्सपेंसेस क्या हैं और पर्सनल और अदर देन बिजनेस एक्सपेंसेस क्या है. So you will be making a chart whereby you will be writing the inflow of funds and the nature of such inflow of funds. कि ये पैसा कहां से आया है, बैंक ने लोन दिया है, डेटर से रिकवरी है, करंट एसेट से रिकवरी है, वॉट एवर द केस में भी. और इसका आपको पूरा प्रॉपर आउटफ्लो बना के देना है कि पैसा जो आया वो कहाँ यूज हुआ. क्रेडिटर्स को दिया परचेजेस के लिए, आपने एक्सपेंसेस करे, आपने गवर्नमेंट को दिया, आपने बैंक को रीपे करा लोन, अनसिक्योर्ड लोन रीपे करा, व्हाट हैव यू डन. तो आपको वो पूरी डिटेल देनी पड़ेगी अपने बैंक अकाउंट्स की कि उसमें पैसा कहाँ से आया और कहाँ गया. मैं आपको इसका एक और एग्जांपल बताता हूँ, प्रैक्टिकल एग्जांपल. हमने अभी एक कंपनी को ऑडिट करा सर. फॉर एन एग्जांपल, उस कंपनी की लिमिट थी 10 करोड़ रुपीस और उसके डेटर थे 10 करोड़ के. ठीक है सर, 10 करोड़ की लिमिट थी और डेटर से 20 करोड़ के डेटर्स थे, क्योंकि मार्जिन लगा के डीपी फिर निकल जाती है. तो 10 करोड़ की लिमिट थी और 20 करोड़ के डेटर थे उसमें. सर उसमें क्या हुआ, जब हमने बैंक स्टेटमेंट को रिव्यू करा, हमने देखा कि बैंक स्टेटमेंट में मूवमेंट तो है, डेबिट क्रेडिट सब हो रहा है, कि बैंक में पैसा आ रहा है और बैंक की रीपेमेंट्स हो रही है, ईएमआई की, इंटरेस्ट की, प्रिंसिपल की रीपेमेंट्स हो रही है. बट जब हमने इनफ्लो को चेक करा, वी ऑब्जर्व कि जो पैसा आ रहा था वो सिर्फ एक ही कंपनी से आ रहा था, बार बार एक ही कंपनी से पैसा आ रहा था और वही बैंक को जा रहा था. तो उस केस में क्या हुआ, the aging analysis that he was submitted to the banks was wrong. How? वो कैसे गलत थी सर? वो क्या करते थे, जो पैसा थर्ड कंपनी से लेते थे उसको जो डेटर्स खड़े हैं उसमें एडजस्ट करके दिखाते थे वो, कि ये देखिए हमारा इंडियन डेटर से पैसा रिकवर हो रहा है, जबकि उन डेटर से तो पैसा कभी रिकवर ही नहीं हुआ. दे वर बोगस पार्टीज जिनके नाम पे डेटर्स को खड़ा करा हुआ था और उनसे पैसा कभी रिकवर ही नहीं हुआ. In that case, all his debtors become more than 90 days and hence not allowed for the purpose of drawing power. वो drawing power के लिए allow ही नहीं हुए कभी. Hence, as an auditor, आपको verify करना है the exact money trail, कि पैसा कहाँ से आया और कहाँ गया. Once you are able to identify the money trail, then you will be able to check कि whether the funds have been utilized for the purpose for which they were sanctioned or not. I hope this part is clear. To examine routing of turnover in the accounts other than consortium member bank accounts. इसमें क्या होता है सर पॉइंट, you have to check whether the funds have been routed through bank accounts जिससे आपने लोन लिया हुआ है. इसमें क्लॉज होता है सर, जनरली बैंक्स के सैंक्शन लेटर में there is a clause that all the funds are to be routed through their bank accounts and not through any other bank account. तो अगर आप किसी और बैंक अकाउंट के थ्रू रूट कर रहे हैं, then it is considered as diversion of funds. वो डाइवर्जन कंसीडर करा जाता है.
कि ये डाइवर्जन ऑफ फंड्स है सर, कि अगर वो किसी और बैंक अकाउंट्स के थ्रू रूट कर रहे हैं। तो एज एन ऑडिटर एंड दिस पॉइंट हैज आल्सो बीन इनकॉर्पोरेटेड इन योर कारो में वो कहता है वेदर एनी डाइवर्जन ऑफ फंड्स हैव बीन ऑब्जर्व्ड बाय यू और नॉट, एंड डाइवर्जन की डेफिनेशंस आपको आरबीआई मास्टर सर्कुलर से लेनी पड़ेगी। जुलाई 2020 वाला जो है, 15 वाला है, वो कंटिन्यू होता है आगे। तो आपको जो आरबीआई का मास्टर सर्कुलर है, फ्रॉम देयर यू हैव टू टेक द डेफिनेशन ऑफ डाइवर्जन ऑफ फंड्स की क्या डेफिनेशन है। तो इफ योर बोरोअर इज रूटिंग थ्रू बैंक अकाउंट्स, जैसे मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ये मेरे पास एक ऑडिट रिपोर्ट पड़ी है जिसकी मैं अभी कंक्लूजन ही ड्राफ्ट कर रहा था, मैं फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट। ये देखिए सर, ये बाय चांस मेरे पास अभी पड़ी थी, मैं अभी ऑफिस में था। ये मैंने क्या लिखा हुआ है सर, अगर आप इफ यू कैन रीड इट, एज पर आरबीआई गाइडलाइंस डाइवर्जन ऑफ फंड्स इज डिफाइंड एज फॉलोज। उसके अंदर हमने पूरी डेफिनेशन दे रखी है रिगार्डिंग डाइवर्जन ऑफ फंड्स। So we have given the complete definition of diversion of funds, that what is diversion of funds. उसके अंदर if you are operating any bank accounts other than the consortium member bank accounts or member bank accounts, then you have to report such transactions here. आपको you have to give a summary कि उन बैंक अकाउंट्स में पैसा कहां से आया और वो अल्टीमेटली यूज कहां पे हुआ। इसमें बाइफर्केशन है सर, मैं इसमें और थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ, हमारे पास टाइम कम है लेकिन फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। There is a difference between diversion of funds and siphoning of funds as per RBI Master Circular. सर क्या डिफरेंस है? Diversion of funds is operating bank accounts other than consortium member banks. That is diversion. What is siphoning of funds? Operating bank accounts other than consortium member bank accounts and not utilizing it for business purposes. कि हमने बिजनेस के लिए यूज ही नहीं करे, then it is considered as siphoning of funds and fraud. If you are operating bank accounts other than consortium member bank accounts, it is considered as diversion of funds. I hope this is clear. Next point है फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ डेटर्स का, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। नेक्स्ट आता है ट्रांजेक्शन ऑफ सब्सटेंशियल अमाउंट विच डज नॉट सीम टू बी ए नॉर्मल ट्रेड आर्म्स लेंथ ट्रांजेक्शन। आपको आइडेंटिफाई करना है वेदर द सेल्स परचेज और एनी एक्सपेंसेस और एनी ट्रांजेक्शंस आर डन एट आर्म्स लेंथ और नॉट। मैं आपको उसका बताता हूं, इसको भी इन्होंने अब कारो 2020 में इनकॉर्पोरेट कर दिया है, वेयर यू हैव टू आइडेंटिफाई वेदर एनी लोन एडवांस सिक्योरिटी गारंटी हैज बीन गिवन विच इज प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी और विच इज नॉट एट आर्म्स लेंथ। मैं आपको इसे एग्जांपल बताता हूं। सपोज योर कंपनी इज एन एनबीएफसी, आप किसी एनबीएफसी को ऑडिट कर रहे हैं सर, ठीक है सर। आपकी एनबीएफसी जिसका आप ऑडिट कर रहे हैं उसने किसी बैंक को लोन दिया, उसने किसी बंदे को लोन दिया, उस एनबीएफसी ने 90 डेज तक वो पैसा वापस नहीं आया, 90 डेज तक वो पैसा ओवरड्यू रहा। तो 91st डे पे मैंने क्या करा, मैंने सपोज करिए उसको हमने 10 करोड़ का लोन दिया था और उसका 1 करोड़ रुपए ड्यू हो चुका है फॉर 90 डेज। मैंने 91st डे पे क्या करा, उसको 2 करोड़ रुपए का लोन और दे दिया मैंने कि 1 करोड़ तो पुराना मेरे को चुका दे और 1 करोड़ रुपए और ले लो। दिस इज कॉल्ड एवरग्रीनिंग ऑफ अकाउंट, वेयर बाय आई हैव गिवन अ फ्रेश लोन so as to settle the existing overdue loan. This is a transaction which is not at arm's length. So this can vary from nature to nature. जैसे मैंने आपको मोबाइल फोन का एग्जांपल बताया कि हम रिलेटेड पार्टी को तो ये 50,000 का बेच रहे हैं, अनरिलेटेड को हम बेच रहे हैं 30,000 का, या इसका एग्जांपल उल्टा कर देते हैं कि अनरिलेटेड को तो हम बेच रहे हैं 50,000 का, रिलेटेड को बेच रहे हैं हम 30,000 का आईफोन। This is a transaction which is not at arm's length. तो अगर आपके पास ट्रांसफर प्राइसिंग की रिपोर्ट आती है, अगर आपके पास ट्रांसफर प्राइसिंग की रिपोर्ट होती है, तो यू कैन टेक द ट्रांसफर प्राइसिंग रिपोर्ट एज वेल टू आइडेंटिफाई वेदर द ट्रांजेक्शन इज डन एट आर्म्स लेंथ और नॉट। ठीक है सर। Next point is regarding transaction with group companies, associate companies. So you have to check whether the accounting standard 18 has been followed or not regarding related parties, and whether the transactions with the promoter company, group companies has been undertaken properly and at arm's length or not.
नेक्स्ट पॉइंट है मूवमेंट ऑफ अनसिक्योर्ड लोन। तो जैसा मैंने आपको शेयर कैपिटल के टाइम पे बताया था, ट्रेसिंग द सोर्स एंड जेन्युइननेस ऑफ कंट्रीब्यूशन बाय प्रमोटर्स, जो फर्स्ट पॉइंट था हमारा, सिमिलर थिंग इज टू बी वेरीफाइड इन अनसिक्योर्ड लोन, बिकॉज द प्रमोटर कंट्रीब्यूशन कैन आइदर बी इन फॉर्म ऑफ शेयर कैपिटल और इट कैन बी इन फॉर्म ऑफ अनसिक्योर्ड लोन। प्रमोटर कंट्रीब्यूशन दोनों तरीकों से हो सकती है, इसीलिए आपको रिव्यू करना है unsecured loan whether the source of contribution of such unsecured loan is genuine or not. And last point is examining the chain of transactions pertaining to units, promoters, partners, either they are bogus family or other settlement transactions. इसके अंदर आपको चेक करना है कि जो रिलेटेड पार्टी से, जो ग्रुप कंपनी से, प्रमोटर से जो ट्रांजेक्शन हो रही है, whether they are actual business transaction or not. मैं आपको एग्जांपल देता हूं, एक जो हमने आइडेंटिफाई करा था, the company was going into losses, जिसका हम ऑडिट कर रहे थे, that was going into major losses, but still the promoter was taking a remuneration of 10 crore rupees per year. There were no other major employees, only promoter and 2-3 more employees were there, and promoter was booking a remuneration of 10 crore rupees per year as a salary. It was not a genuine transaction because the company was bearing losses, the turnover was 20-30 crore rupees, and on that the promoter was booking a remuneration of 10 crore rupees. It was not a normal trade transaction. It was not at arm's length. So if you will see the scope of forensic audit, it includes your complete balance sheet. हमने शेयर कैपिटल की बात करी, हमने फिक्स एसेट्स की बात करी, हमने इन्वेंट्री की बात करी, हमने डेटर्स की बात करी, हमने लोन्स एडवांसेस की बात करी, हमने लाइबिलिटीज की बात करी। आपके प्रॉफिट एंड लॉस इंक्लूड होता है, एक्सपेंसेस, योर सेल्स, परचेजेस. So the complete forensic audit includes a complete evaluation of your balance sheet. आपको बैलेंस शीट को कंप्लीटली रिव्यू करना है कि एक्चुअल में उसमें सेल्स परचेज ट्रांजैक्शन करेक्ट है, नहीं है, या क्या हुआ होगा. आई होप द स्कोप इज क्लियर टू यू. अगर अब हमारे पास कितना टाइम बचा है, हमारे पास 15 मिनट्स है, तो इफ यू हैव एनी क्वेरीज आई कैन टेक ऑल योर क्वेरीज. इफ यू हैव टाइम, मैं आपके साथ आईबीसी का जो स्कोप होता है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड का जो स्कोप होता है, आई विल डिस्कस दैट एज वेल विद यू. अगर आपका वो कोई स्कोप है, मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ. प्लीज टेल मी, ये है शैलजा मोहन जी पूछ रही हैं, प्लीज टेल मी द मीनिंग ऑफ आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन. मैम जैसे मैंने आपको बताया, मोबाइल फोन का बताया मैंने आपको कि मैं एक मोबाइल फोन को जो है, मैं अनरिलेटेड को तो बेच रहा हूँ 50,000 का, बट मैं रिलेटेड पार्टी को बेच रहा हूँ 30,000 का. सो आई एम सेलिंग द गुड्स एट अ रेट लेस देन द नॉर्मल ट्रांजैक्शन, कि मैं रिलेटेड पार्टी को बेनिफिट दे रहा हूं बाय अंडर वैल्यूइंग, अंडर सेलिंग माय गुड्स एट अ लॉस ऑफ 20,000. दिस इज कॉल्ड अ ट्रांजैक्शन विच इज नॉट एट आर्म्स लेंथ. आर्म्स लेंथ मीन कि अगर आप किसी अनरिलेटेड बंदे को बेचते वो गुड्स या सर्विसेज देते तो कितने की देते. अगर आपने मैम ट्रांसफर प्राइसिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, ट्रांसफर प्राइसिंग में क्या कहता है कि अगर आप किसी भी अनरिलेटेड बंदे को कोई भी सामान देते हैं और वही सामान आप रिलेटेड को किस रेट पे दे रहे हैं, देयर कैन बी बल्क डिस्काउंट्स, क्वांटिटी डिस्काउंट्स, कैश डिस्काउंट्स, दैट इज अ सेपरेट थिंग. That is dependent on case to case basis. But in case of your arm's length transaction, you have to see कि अगर मैं सामान किसी अनरिलेटेड बंदे को बेचता तो किस रेट पे बेचता. दिस इज आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन. एक क्वेश्चन है रिगार्डिंग रेसिप्रोकल डेटर्स. सर रेसिप्रोकल डेटर्स मैं आपको बताता हूं. दिस इज अ टाइप ऑफ फ्रॉड. कैसे फ्रॉड है मैं आपको बताता हूं. सपोज फॉर एन एग्जांपल, मैं मोबाइल फोन ही मैन्युफैक्चर कर रहा हूं सर, ठीक है सर. उसमें क्या हुआ, मैन्युफैक्चर नहीं कर रहा, मैं मोबाइल फोन परचेज कर रहा हूं और मैं इसका कलर इससे रेड कलर करता हूं. मैं, मेरा काम ये है, आप मानिए कि इसमें कवर नहीं लगा हुआ कोई, देयर इज नो कवर. इसमें क्या है, मैं मोबाइल फोन का बैक एंड का जो कलर है उसको मैं सिर्फ ब्लैक से रेड करता हूं. मेरा काम ये है. तो मैंने क्या करा, कंपनी ए है, एक बी है, तो मैंने कंपनी ए से ये वाला मोबाइल फोन खरीदा,
उसको पीछे से रेड करा और वही मोबाइल फोन कंपनी ए को वापस भेज दिया मैंने। ठीक है, देयर इज नो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी बीइंग अंडरटेकन बाय अस, इट इज जस्ट जॉब वर्क दैट आई एम डूइंग, कि मैंने ये लेके इसका कलर चेंज करके ये उसको वापस दे दिया मैंने। उस केस में क्या हुआ सर, उस केस में मैं बैंक से लोन लेने के लिए क्या दिखाऊंगा, इसको दिखाऊंगा कि मैंने परचेज करा और वापस सेल करा। तो उसकी किताबों में भी मैं डेटर खड़ा हुआ और मेरी किताबों में भी वो डेटर खड़ा हुआ। हम दोनों ने डेटर्स दिखाए, क्रेडिटर्स दिखाए और बैंक से लोन ले लिया। हमने डिस्क्लोज नहीं करा रिलेटेड पार्टी क्या है क्या नहीं, हमने कुछ डिस्क्लोज नहीं करा। दिस इज कॉल्ड रेसिप्रोकल डेटर्स, कि भी एक कंपनी की और दो कंपनियों की आपस में दोनों की किताबों में डेटर्स खड़े हैं, जबकि वो डेटर्स ना होके वो जॉब वर्क होना चाहिए था। बिकॉज एज पर एक्साइज लॉ, अगर आपने एक्साइज लॉ पढ़ा है, उसके अंदर अनलेस एंड अनटिल देयर इज अ मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी, आपकी वो सेल ही नहीं हुई ना सर, दैट इज अ जॉब वर्क यू आर डूइंग। देयर इज नो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी दैट यू आर अंडरटेकिंग, दैट इज रेसिप्रोकल डेटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कवर आईबीसी। तो अगर किसी का और कोई क्वेश्चन है तो मैं देखूं, वरना मैं आईबीसी कवर कर लेता हूं। किसी का क्वेश्चन नहीं है तो सर मैं अब आपको साथ आईबीसी का पार्ट कवर कर लेता हूँ फटाफट। इट विल हार्डली टेक 5-7 मिनट्स। उसके बाद अगर किसी क्वेरीज होंगी देन विल टेक, क्या फॉरेंसिक ऑडिट के बारे में क्या है क्या नहीं, विल टेक दैट क्वेरीज। आईबीसी के अंदर आपके जो सेक्शंस है उसमें 4 सेक्शंस हैं, 43, 45, 50 एंड 66। देयर आर 4 सेक्शन। उसके अंदर आपके 4 सेक्शंस क्या है, प्रेफरेंशियल, अंडरवैल्यूड, एक्सटॉर्शनेट एंड फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन। If you'll ask me, the scope of IBC is wider than the scope of forensic audit. तो IBC में उसको हम कहते हैं ट्रांजैक्शन ऑडिट। तो स्कोप ऑफ ट्रांजैक्शन ऑडिट इज वाइडर देन द स्कोप ऑफ फोरेंसिक ऑडिट। रीजन बीइंग, आपके सेक्शन 66 में जो फ्रॉड वाला है उसके अंदर पूरा फोरेंसिक ऑडिट का स्कोप इनकॉर्पोरेट हो जाता है सर। वॉट एवर फोरेंसिक ऑडिट यू आर डूइंग दैट इज इंक्लूडेड इन सेक्शन 66। उसके अलावा 3 सेक्शन और आ जाते हैं, 43, 45 एंड 50। ठीक है सर। अब इन सेक्शन में क्या कहता है, प्रेफरेंशियल, एक्सटॉर्शनेट एंड अंडरवैल्यू ट्रांजैक्शन। मैं आपको ये फटाफट डिस्कस कर लेता हूं अभी। ठीक है सर। इसके अंदर अब एग्जांपल क्या आता है प्रेफरेंशियल के केस में। Preferential transactions are those transactions whereby we have given preference to someone who is an unsecured creditor over the secured creditor. हमने सिक्योर्ड क्रेडिटर के ऊपर किसी और को प्रेफरेंस देके हमने पेमेंट कर दी। इसका एग्जांपल लेते हैं सर। सपोज आपने स्टेट बैंक से 100 करोड़ का लोन लिया है, ठीक है, एंड आपकी बुक्स में अनसिक्योर्ड लोन खड़े थे इन फॉर्म ऑफ प्रमोटर कंट्रीब्यूशन। आपकी बुक्स में अनसिक्योर्ड लोन खड़े 50 करोड़ के और आपके सिक्योर्ड क्रेडिटर्स खड़े 100 करोड़ के। आपके पास जब पैसे आए, व्हेनेवर यू रिसीव्ड फंड फ्रॉम डेटर्स, आपने क्या करा, आपने अनसिक्योर्ड लोन को रीपे कर दिया बट बैंक को पे नहीं करा। दिस इज कॉल्ड प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शन। इसके अंदर एक एक्सेप्शन है, सेक्शन 43 सबसेक्शन 2। उसमें एग्जम्पशन क्या है सर, कि अगर आपने बिजनेस पर्पस इसके लिए पे करा है देन इट विल नॉट बी कंसीडर्ड एज प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शन। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय दैट, कि अगर आपने किसी से गुड्स लिए और उन गुड्स के अगेंस्ट आप उसको पेमेंट कर रहे हो एज अ क्रेडिटर, देन इट इज नॉट अ प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शन। बट अगर आपने किसी का लोन खड़ा है 10 साल से, 15 साल से, 5 साल से लोन खड़ा है, आपने वो रीपे कर दिया, दैट इज कंसीडर्ड एज प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शन। प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शन का टाइम जो स्पेसिफाइड है, इट इज 1 year in case of unrelated party from the date of commencement of insolvency and 2 years in case of related party from date of commencement of insolvency. तो अगर हम आज की डेट में बैठे हैं, आज की डेट है 13 मार्च, तो 13 मार्च 22 में अगर हम बैठे हैं तो हमको अनरिलेटेड पार्टीज देखनी है 14 मार्च 21 से लेकर 13 मार्च 22 तक, और रिलेटेड पार्टी देखनी है 14 मार्च 20 से लेकर 13 मार्च 22 तक। This is the time period of preferential transaction. Undervalue, अभी जैसे मैंने आपको मोबाइल फोन का एग्जांपल समझाया था आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन का, दैट इज अंडर वैल्यू।
कि आपने स्टॉक रजिस्टर लिया, आपका मोबाइल फोन जो है अनरिलेटेड को तो हमने बेचा 50,000 का, रिलेटेड को बेचा हमने 30,000 का. दैट इज कॉल्ड एन अंडर वैल्यू ट्रांजेक्शन. ट्रांजेक्शन विच आर अंडरटेकन एट अ सिग्निफिकेंटली लेस वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन. इसका एक और एग्जांपल मैं देता हूं. सपोज आपकी कंपनी में एक फिक्स एसेट्स खड़े हैं सर, प्लांट एंड मशीनरी खड़ी है. आपने क्या करा, वो प्लांट एंड मशीनरी को डिस्पोज ऑफ कर दिया. उसकी वैल्यू थी 50 lakhs, आपने उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया 20 lakhs में. उसकी मार्केट वैल्यू 50 lakhs थी, बट आपने उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया 20 lakhs में. देन इट इज कंसीडर्ड एज एन अंडर वैल्यू ट्रांजेक्शन. इसका भी टाइम पीरियड 2 years है सर, फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ इंसॉल्वेंसी डेट. थर्ड आता है एक्सटॉर्शनेट क्रेडिट ट्रांजेक्शन. Now, what do you mean by extortionate credit transaction? Extortionate credit transactions are those transactions whereby terms of such transactions are exorbitant in nature. अब इसका क्या मतलब है, मैं आपको समझाता हूँ एग्जांपल से. आपने स्टेट बैंक से एक लोन ले रखा है 100 crore का एट अ रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 8% फॉर अ टेन्योर ऑफ 10 years. 100 crore का लोन 8% इंटरेस्ट रेट, 10 साल का टेन्योर. आपने क्या करा, एक एनबीएफसी से लोन उठा लिया आपने, और 3 साल पहले वो एनबीएफसी से जो आपने लोन उठाया, आपने लोन उठाया 10 crores का एट अ रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 24% ऑन टर्म्स ऑफ रीपेमेंट टू बी रीपेड इन 2 years. तो जो उसकी टर्म्स ऑफ रीपेमेंट है, दैट आर एक्सॉर्बिटेंट इन नेचर, दे आर रीजनेबली हाई. दे आर कि भी 8% एक जगह है और 24% एक जगह है. तो आपने जो करंट सिक्योर्ड क्रेडिटर्स है उनके कंपैरिजन में जो आपने लोन उठाया, दैट इज एक्सॉर्बिटेंट इन नेचर. कि भी उसका इंटरेस्ट रेट, जैसे यहाँ पे आप पढ़ेंगे सेक्शन 50 में, आप सेकंड लाइन पढ़िए, टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सच डेट, इंटरेस्ट रेट, रीपेमेंट, सिक्योरिटी इंटरेस्ट आर एक्सॉर्बिटेंट इन नेचर. सिक्योरिटी इंटरेस्ट, जैसे आपने 100 crore के लोन के लिए तो 50 crore की सिक्योरिटी दे रखी है, लेकिन यार 10 crore के लोन के लिए आपने 50 crore की सिक्योरिटी और दे दी. तो फॉर अ लोन ऑफ 10 crore आपने सिक्योरिटी दी 50 crores की. तो दोज आर एक्सॉर्बिटेंट इन नेचर. तो इफ यू हैव अंडरटेकन एनी ट्रांजेक्शन विद एन एक्सटॉर्शनेट क्रेडिट ट्रांजेक्शन, दैट विल कम अंडर सेक्शन 50. इसका भी टाइम पीरियड 2 years है सर, फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ इंसॉल्वेंसी. प्रायर टू दैट 2 years आपको लेने हैं. लास्ट सेक्शन आता है 66 रिगार्डिंग फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन. जैसे मैंने आपको बताया, इसके अंदर आपकी कंप्लीट फोरेंसिक ऑडिट का स्कोप आ जाएगा. You have the complete balance sheet in this. Balance sheet, profit and loss, notes, everything is included. You have to see whether the transaction are genuine business transaction or have been undertaken to deceive or defraud the creditors and are fraudulent in nature. I hope these 4 sections of IBC are clear to you. ये हमारा आईबीसी का स्कोप था. बाकी ये सारे थ्योरी है, इफ यू वांट यू कैन रीड. ये सारा इसमें इंक्लूडेड है. प्लानिंग, एक्सेप्टिंग द असाइनमेंट, प्लानिंग, एग्जीक्यूटिंग द असाइनमेंट, this is all is included. So now if you have any queries, I will take the queries or we can end the session. PPT मैं सर शेयर कर दूंगा. I'll share the PPT with everyone. और किसी की कोई query है, we can take the query sir. Okay, participant, if you have any queries, please you can bring it up. Rahul sir will be taking it. तो जिसके पास भी कुछ भी query है आप पूछ सकते हैं अभी. You are free to answer. हाँ जी सर. असाइनमेंट इम्पेनलमेंट, तो आपको सबसे पहले आपको अपनी फर्म को इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन में इम्पेनल करवाना पड़ेगा. मैम पल्लवी जी, आपको इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन है आईबीए, वो साल में एक बार ही खुलता है, जनरली जून जुलाई में खुलता है वो. तो आपको अपनी फर्म को, सीए फर्म्स को उसमें इम्पेनल करवाना पड़ेगा. वंस यू आर इम्पेनल्ड इन आईबीए, आफ्टर दैट यू कैन अप्रोच द बैंक्स फॉर योर फोरेंसिक ऑडिट असाइनमेंट्स. आपको लेकिन आईबीए में इम्पेनल करवाना जरूरी है, सो दैट द बैंक्स कंसीडर यू फॉर अलॉटिंग फोरेंसिक ऑडिट असाइनमेंट्स. सेकेंडली, ट्रांजैक्शन ऑडिट के लिए ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं है कि भी आपको आईबीए में इम्पेनल होना चाहिए.
बट जनरली दे आस्क फॉर आईबीए इम्पैनल्ड फर्म्स ओनली, तो उसके लिए भी आपको आईबीए में इम्पैनल करवाना पड़ेगा। आफ्टर दैट आपको बैंक्स को अप्रोच करना पड़ेगा फॉर अलॉटिंग यू असाइनमेंट। थैंक यू रीना जी। हाँ जी, और किसी की सर कोई क्वेरी है तो वी कैन टेक द क्वेरीज और वी कैन एंड द सेशन। There's one question put in the How to enter the field of forensic audit as a fresher CA? लक्ष्य जी, आपको पहले FAFD का कोर्स करना पड़ेगा इंस्टीट्यूट का, या एक कोर्स है सर्टिफाइड फ्रॉड एग्जामिनर का, ICI से है FAFD का, या फिर एक कोर्स है सर्टिफाइड फ्रॉड एग्जामिनर, ये वो USA का कोर्स है, आप वो भी कर सकते हैं। तो वंस यू अंडरटेक दैट कोर्स आपको नॉलेज हो जाएगी, यू विल गेट थ्योरेटिकल नॉलेज अबाउट द ऑडिट्स, हाउ इट इज टू बी डन। बट उसका प्रैक्टिकल एक्सपोजर आपको लेना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिकली कहीं पे काम करना पड़ेगा, किसी के साथ, किसी सीए फर्म के साथ या किसी कंपनी के साथ, यू विल हैव टू गेट एसोसिएटेड, यू विल हैव टू हैव एन एक्सपोजर, क्योंकि फोरेंसिक ऑडिट में रिपोर्ट राइटिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टास्क। रीजन बीइंग योर रिपोर्ट्स विल बी गोइंग इन कोर्ट्स, इट विल बी गोइंग टू द गवर्नमेंट एजेंसीज। तो जब आपकी पहली असाइनमेंट आप करेंगे, पहली 10 असाइनमेंट्स के लिए प्लीज गेट योर रिपोर्ट रेड फ्रॉम समवन हु हैज अंडरटेकिंग सच ऑडिट्स। तो इसलिए जरूरी है कि भी आप पहले FAFD या CFE का कोर्स करिए, उसके बाद किसी के साथ 1 साल 2 साल काम करिए फोरेंसिक ऑडिट पे, सो दैट यू हैव एन एक्सपोजर, आफ्टर दैट यू कैन वर्क इन द फील्ड ऑफ फोरेंसिक ऑडिट। हाँ जी मैम, स्नेहा जी, मैंने ICI से भी कर रखा है और मैंने CFE भी कर रखा है। पल्लवी जी, अगर आपकी IBA इम्पैनलमेंट नहीं है फुलफिल, तो आपको फुलफिल करनी पड़ेगी। अगर आप IBA में इम्पैनल नहीं होंगे तो आपको काम नहीं मिलेगा बैंक से, तो एटलीस्ट, क्योंकि बैंक्स में मिनिमम रिक्वायरमेंट इज IBA इम्पैनलमेंट। डिफरेंस बिटवीन फ्रॉड एग्जामिनर एंड फोरेंसिक ऑडिट सर्टिफिकेट, देयर इज नो डिफरेंस, बोथ द सर्टिफिकेट आर वेल रिकॉग्नाइज्ड इन इंडिया, जस्ट दैट जो इंस्टीट्यूट का कोर्स है इट इज अ बिट इजी एज कंपेयर टू द फ्रॉड एग्जाम। CFE का जो कोर्स है जो USA का है, इट इज अ बिट डिफिकल्ट, क्योंकि उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, उसमें नेगेटिव मार्किंग्स है, वो टाइम बाउंड कोर्स है, तो इसलिए उसमें सारी चीजें होंगी। बट इफ यू डू एनी ऑफ देम इट इज सफिशिएंट फॉर यू। ICI मॉड्यूल नेम रिलेटेड टू फोरेंसिक ऑडिट, सर मॉड्यूल नहीं है, फोरेंसिक ऑडिट एंड फ्रॉड डिटेक्शन करके कोर्स है FAFD, आपको वो ज्वाइन करना पड़ेगा इंस्टीट्यूट का फॉर द पर्पज ऑफ फोरेंसिक ऑडिट। फ्रीज फॉर सम GST डिमांड, मैम ये तो आपको GST वाले से पूछना पड़ेगा, लेकिन GST में अगर डिमांड रेज होती है, आप उसमें जो उनका मिनिमम मेरे ख्याल 10% जमा करा के आप अपना अनफ्रीज करवा सकते हैं मैम अकाउंट GST में। तो आपको GST डिपार्टमेंट से अप्रोच करना पड़ेगा, वहां पे जाके एक मिनिमम डिमांड अगर आप जमा करा के यू कैन गेट योर अकाउंट अनफ्रीज। एंड MCA हैज नॉट अपडेटेड माय लोन सेटिस्फेक्शन, उसके लिए आपको बैंक से फॉलो अप करना पड़ेगा वेदर दे हैव फाइल्ड द चार्ज रिलीज फॉर्म विद द MCA और नॉट। अगर उन्होंने चार्ज रिलीज फॉर्म फाइल करा होगा MCA पे तो मैम लोन सेटिस्फेक्शन अपने आप आ जाएगा, अगर उन्होंने नहीं करा तो वो नहीं आएगा, तो आपको बैंक से फॉलो अप करना चाहिए। इज देयर एनी ISA ऑडिटर पैनल, मैम डीसा का ऑडिटर पैनल तो नहीं है, डीसा का उन्होंने डीसा की लिस्ट है हु हैव डन द डीसा कोर्स, डीसा का एज सच कोई ऑडिटर पैनल नहीं होता, या ICI का, मेरे को लगा आप ICI लिख रहे हैं शायद वहां पे, तो ICI का कोई ऐसे सेपरेट पैनल नहीं है फोरेंसिक ऑडिटर का। सर यू हैव शेयर्ड वन बुक ऑन स्टैंडर्ड ऑन वेबसाइट, ये है सर। कंपेंडियम ऑन फोरेंसिक ऑडिट, फोरेंसिक अकाउंटिंग एंड इन्वेस्टिगेशन स्टैंडर्ड, दिस इज द नेम ऑफ द बुक, ये आपको मिल जाएगी। कितने की है बुक? ये 200 रुपए की बुक है सर, मेरे पास तो फ्री में आई है क्योंकि मैं इनके ग्रुप में था, लेकिन ये 200 रुपीज की बुक है जो आप इंस्टीट्यूट से परचेज कर सकते हैं। रीना जी, डीसा क्वालिफाइड नहीं, आपको FAFD करना पड़ेगा, बट आपको ऐसी किसी फर्म को ज्वाइन करना पड़ेगा या आपको IBA इम्पैनल्ड होना पड़ेगा, देन ओनली यू विल बी एबल टू गेट फोरेंसिक ऑडिट। आई विश टू गेट इन्वॉल्व इन फोरेंसिक ऑडिट। स्नेहा जी, आपको अगर आप दिल्ली में हैं तो आप किसी भी जैसे बिग फोर्स में वहां पे अप्रोच कर सकती हैं यहाँ पे, या फिर आप जौन सी भी स्टेट में है, यू कैन अप्रोच द फर्म्स हु आर डूइंग गुड फोरेंसिक ऑडिट्स एंड यू कैन ज्वाइन देम फॉर पर्पज ऑफ फोरेंसिक ऑडिट एंड एक्सपोजर।
सर और कोई क्वेरीज नहीं है तो फिर क्लोज करें सेशन को? Yes, sir. I guess there are no more queries. So thank you so much to all the participants, and obviously this was a great session. मैं नहीं कह रहा हूँ, I read some of the comments which said that आज का session बहुत अच्छा रहा. Good learning. Thank you so much, Hemant ji, for your kind words. Okay, so to all the participants who were unable to join today or were busy somewhere and or joined in between, the session will be available on Optotax YouTube channel. You can go and watch it there at any time as per your convenience. If you like it, please subscribe so that you will be notified with our latest updates and learning session like these. So thank you so much. Thank you so much, sir. Rahul sir, once again. Thank you everyone. Thank you everyone. Okay, good night. Stay in touch. Thank you.